हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होपफुली आप बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। सारे कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे होंगे। कोशिश करें कि आप लाइव क्लास को ही मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। नहीं तो अगर आपने एक बार क्लास को छोड़ दिया तो फिर वो चीज़ें पाइल अप होनी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आगे हमारी यूनिट्स बढ़ती जाएगी वैसे टाइम ड्यूरेशन भी कोर्स का बढ़ता जाएगा, and it would be very difficult to complete the backlog. So my advice is that please लाइव सेशंस को आप अटेम्प्ट करें, और रिविजन जब कभी भी करें तो सब बेटर एडवाइस फ्रॉम माय साइड इज फर्स्ट डाउनलोड द वीडियो, ताकि आप फिर जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब कभी भी रिवाइज करें, एक तो फास्ट रिविजन होगा क्योंकि आप आसानी से स्क्रॉल कर पाएंगे, और दूसरा आपको हर टाइम डाटा इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट डाउनलोड करने के बाद जब आप प्ले बटन पर ऑप्शन करेंगे तो फिर वो आपके इंटरनेट डाटा कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि जो आपका मोबाइल डिवाइस है उसके अंदर ही कहीं पर ऐप के अंदर जहाँ कहीं से ये स्टोर होगा वहाँ से ये प्ले हो जाएगा। इट्स बेटर टू सी द लाइव सेशन एंड देन download click on the download button and then start revising the things. Okay, and then you can revise at 1.5x or even more speed than that. ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली लिपिड्स के बारे में, और अब तक हम सिंपल लिपिड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और up to now what we have seen that these simple lipids, these are the esters of fatty acids and some kind of polyhydroxy alcohol, जिसमें हमने मोनोएसिलग्लिसरॉल, डाइएसिलग्लिसरॉल और ट्राइएसिलग्लिसरॉल के बारे में पढ़ा, जिसमें से ट्राइएसिलग्लिसरॉल इज अ न्यूट्रल फैट. इट इज द फॉर्म ऑफ energy which is preferably stored in the animals. To lesser extent this is also stored in a plants. Clear? आज हम बेसिकली लिपिड्स के अंदर we are going to discuss the derived lipids. Derived lipids are those which are having some other groups like sugar, amino acid, etc. besides fatty acid and polyhydroxy alcohol. So जहां पर फैटी एसिड और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के अलावा कुछ और ग्रुप्स भी हो, जैसे शुगर, अमीनो एसिड, सम फॉस्फेट ग्रुप एटसेट्रा, these would be referred to as derived lipids. कहने का मतलब है derived lipids beside having a carbon, hydrogen, oxygen, they may have phosphorus, सल्फर, नाइट्रोजन एटसेट्रा. इस तरीके की चीजें भी वहां पर हो सकती. डिराइव्ड लिपिड्स के बेस्ट एग्जांपल वी सी इन द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, biomembranes, we know that the structural part of biomembrane, the structural part is composed of lipids, and these are not simple lipids, these are often some kind of derived lipids. Most often either these are phospholipids or these are glycolipids. So in today's class, आज की क्लास में हम बेसिकली
मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो एज आई सजेस्टेड, द मेम्ब्रेन लिपिड्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. ऑल्दो एक्सेप्शनली कुछ जगहों पर सल्फोलिपिड्स दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड. ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, the most common class of membrane lipids which occur from prokaryotic system to animals to plant almost everywhere are the phospholipids. The most common membrane lipids which occur is the phospholipids. That is, in these membrane lipids, what you will find is that these membrane lipids, they are amphipathic in nature. Amphipathic in nature. What this means is that most often they have two fatty acids. Most often अगर हम ह्यूमन में या मैमल्स में बात करें तो one of the fatty acid is saturated and another fatty acid is unsaturated. This is the hydrophobic tail part, which has a tendency to remain away from a water. This portion will be responsible for hydrophobic interaction. This is having a glycerol and a phosphate part. Glycerol based phospholipids में अगर देखें तो, and this makes a polar or hydrophilic head. So any molecule which has some kind of polar end as well as non-polar end, all such molecules, these are referred to as amphipathic molecules. Okay, got this? So the polar head region, it carries out a hydrophilic interaction, while non-polar tail region mainly carry out a hydrophobic interaction as well as to certain extent van der Waals interactions. Whenever these membrane lipids, they are suspended in water, जब कभी भी इन membrane lipids को water में suspend किया जाता है तो they form a bilamellar structure. They assemble somewhat like this. Whenever they are suspended in a water, they assemble in a bilamellar structure. This artificial lipid bag is referred to as liposome, that you will study in cell biology. So this is an artificial lipid bag, also referred to as liposome. If you see in the structure of liposome, what you will find is there is a water toward the interior as well as water to the surrounding. अगर हम लिपोसोम को देखें तो इसके अंदर भी पानी है, इसके बाहर की तरफ भी पानी. The membrane phospholipids, they assemble in a fashion that polar head, it comes in contact of a water, polar head on this side as well as polar head on this side, which is making a hydrophilic interaction. While the non-polar tail, this yellow zone which is being drawn, this is representing a non-polar tail. यानी कहने की बात यह है कि जब कोई इन फॉस्फोलिपिड्स को वाटर में सस्पेंड किया जाता है, बाइलेयर इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनका पोलर हेड रीजन है वह वाटर के कांटेक्ट में होगा. सो बाहर की तरफ भी पोलर हेड दिखाई देगा, अंदर की तरफ भी जहां वाटर उसके अंदर ट्रैप्ड है लिपिड बैग में, वहां पर भी पोलर हेड होगा. और जो बीच का कोर रीजन है, दैट इज बेसिकली अ हाइड्रोफोबिक. इस तरीके का जो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बना, आर्टिफिशियल लिपिड बैग बना, इसे लिपोसोम कहा जाता है. सो अब तक हमने मेम्ब्रेन लिपिड्स की जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी. दे आर दीज मेम्ब्रेन लिपिड्स मोस्टली they are amphipathic in nature. Then these derived lipids, and जैसा मैंने कहा कि mainly we will focus ourselves on those derived lipids which is seen in biological membranes.
The major criteria for classification of these derived lipids could be the type of polyhydroxy alcohol used by them. उनमें किस तरीके का पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है. These could be glycerol based. Glycerol is basically a 3-carbon polyhydroxy alcohol. We will come to the structure. Or fatty acid could be utilized or added to an sphingosine. Sphingosine is basically an 18-carbon polyhydroxy, 18-carbon polyhydroxy amino alcohol. Okay, so 3-carbon polyhydroxy alcohol is glycerol. Such lipids, complex lipid, would be referred to as glycerolipids, while wherever a sphingosine is utilized उन्हें sphingolipid कहा जाएगा. So दो broad category हो गई, glycerolipid और sphingolipids, glycerol based lipids and sphingosine based lipids. जो glycerol based lipids हैं उनके ऊपर फर्दर किस तरीके का फंक्शनल ग्रुप एसोसिएटेड है, उसके बेसिस पर ग्लिसरॉल बेस्ड को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड. दे कुड बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. दैट इज बिसाइड हैविंग ग्लिसरॉल के ऊपर फर्दर जो थर्ड OH, क्योंकि दो OH ग्रुप पर तो फैटी एसिड जुड़ी हुई है, एक तीसरा OH ग्रुप ग्लिसरॉल में फ्री है. इस तीसरे OH पर इफ थर्ड फ्री OH ऑफ ग्लिसरॉल हैज एन एसोसिएटेड फॉस्फेट ग्रुप, देन दिस वुड बी रेफर्ड टू एज phospholipid. And there are various examples of phospholipids which include phosphodylethylamine, phosphodylcholine, phosphodylserine, phosphodylinositol, and another is cardiolipid. These are glycerol based phospholipids. Glycerol based glycolipids, they are very rare. Example could be taken as a galactolipids, which is mainly seen in the chloroplast membranes. Means in a plants you can find a galactolipid, which is a glycerol based glycolipid. Similarly, sphingosine based lipids could be further divided into two categories, that is phospholipid and glycolipid. स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स बहुत रेयर होते हैं. स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड का एक ही एग्जांपल है, दैट इज अ स्फिंगोमाइलिन. ध्यान रखें, स्फिंगोमाइलिन भी फॉस्फोलिपिड है, लेकिन स्फिंगोलिपिड स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड. देन स्फिंगोसिन बेस्ड देयर कुड बी second category which is most common, and that common is glycolipids. Sphingosine glycolipids, depending upon ki whether a simple sugar is associated or a complex sugar is associated. So if some monosaccharide is associated, then these are referred to as cerebroside, and if some oligosaccharide is associated, then often they are referred to as globoside or ganglioside. Okay, are you getting this point? Then, so this is an outline classification of the derived lipids. Then moving further, आगे बात करते हैं. सबसे पहले जिस कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड. ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड. सो यहां पर स्ट्रक्चर में देखें कि ये 3 कार्बन का अल्कोहल है ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल के साथ एक एस्टर बॉन्ड के साथ यहां पर देयर इज एन एसोसिएशन 1 फैटी एसिड. एस्टर बॉन्ड के साथ ये सेकंड जो फैटी एसिड इसके साथ एसोसिएटेड हुई. यहां तक का स्ट्रक्चर 1 ग्लिसरॉल विथ 2 फैटी एसिड्स. यहां तक का स्ट्रक्चर हम कल पढ़ चुके हैं. दिस स्ट्रक्चर इज रेफर्ड टू एज डाई एसाइल ग्लिसरॉल.
इस डाईएसिल ग्लिसरॉल के ऊपर फर्दर फॉस्फोरिक एसिड से या फॉस्फोरिक एसिड यहां पर आकर एसोसिएट हो जाए, फॉस्फोरिक एसिड यहां पर फॉस्फोरिक एसिड डी प्रोटोनेट होने के बाद द सेम ग्रुप वुड बी रेफर्ड टू एज फॉस्फेट। तो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप यहां पर आकर एसोसिएट हो जाए तो इसे फॉस्फोलिपिड कहा जाए। अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड, या मोर एक्यूरेटली क्योंकि ये डीप्रोटोनेटेड स्टेट बता रखी है हमने, तो इसका बेटर जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा दैट वुड बी फॉस्फेटाइलेट। और फॉस्फोटाइलेट के ऊपर चार्ज कितना है, तो यू कैन से दैट -2। Almost all glycerol based lipids, they are optical active, and the reason for the optical activity is this carbon. This carbon is chiral. Carbon second is chiral. Glycerol is not a chiral molecule, but glycerol based phospholipids, they are chiral because now there are 4 different functional groups which is associated with this. एक तरफ H है, then on this side there is a CH2 followed by fatty acid, directly fatty acid, and there is some 4th different group on this side. So derivatives of phosphoric acids, these all are optically active, and the glycerol form which is often utilized in them is basically the D form of glycerol that is most often utilized. So this is the structure of phosphatidic acid. Now phosphatidic acid के ऊपर depending upon which group is associated, it is known by different names. जैसे 2 fatty acids प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट ग्रुप, और वहां पर एक और ग्रुप आकर जुड़ गया जो यहां पर ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रखा है, दैट इज कोलिन. कोलिन इज बेसिकली ट्राई मिथाइल इथेन अमीन या एथेनोमीन, रेफर टू एज कोलिन. इस तरीके से यहां पर एक कोलिन ग्रुप, ये सेम कोलिन ग्रुप है जो एसिल कोलिन पर भी जुड़ता है. तो C2H5N ग्रुप होता तो उसे हम इथाइल अमीन कहते, और उसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप और एसोसिएटेड है, इसलिए वी विल नेम इट एज अ ट्राई मिथाइल इथेनॉल अमीन, ऑल्सो रेफर टू एज कोलिन. सो ये फॉस्फेटकोलिन का स्ट्रक्चर. Phosphatidylcholine, it is seen, it is one of the very abundant membrane lipid seen from prokaryotes to even eukaryotes. Phosphatidylcholine is also known by its tribal name, and the tribal name of phosphatidylcholine is referred to as lecithin. Phosphatidylcholine often, beside acting as a membrane component, may also play a role of surfactant. One form which plays a role of surfactant in a lungs referred to as dipalmityl lecithin. यहां पर फैटी एसिड्स 16 वाली हो, यहां पर भी फैटी एसिड 16 वाली हो, यानी पामेटिक एसिड दोनों जगहों पर हो, तो अब इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा डाई पामेटाइल फॉस्फाटाइलकोलिन या डाई पामेटाइल लेसिथिन, which act as a surfactants in lungs. Mainly it is secreted by alveolar cells, and if alveolar cells
they fail to produce this kind of surfactant, then it can lead to a respiratory distress conditions. There would be a trouble in breathing. Often, the premature born babies, they do not have a fully developed lungs. Their alveolar type 2 cells do not produce a surfactant. Result is that most often, after such premature birth of a baby, they have to be kept on some kind of supporting respiratory systems like ventilators. So, phosphatidylcholine, no doubt, it is one of the important membrane component. पर membrane component के साथ साथ इसकी एक फॉर्म जिसे डाइपामेटाइल फॉस्फेटिलकोलिन या जिसे डाइपामेटाइल लैसेथिन कहा जाता है, act as a surfactant. The function of surfactant we will study in animal physiology, that do not allow a mucus to stick together, do not allow a mucus to aggregate. If mucus get aggregate, become thick, sticky, then the lungs alveoli they will not expand. So lungs में alveoli को expand होने में तकलीफ आएगी, difficulty होगी if surfactant is not produced. सर्फेक्टेंट म्यूकस पार्टिकल को आपस में जुड़ने नहीं देता, एग्रीगेट नहीं होने देता. देन फॉस्फेटिलकोलिन को जो एक जनरल नाम है उसको अलग अलग नामों से जाना सकते हैं. सपोज यहां पर 16 कार्बन की फैटी एसिड होती है और यहां पर 18 कार्बन की फैटी एसिड होती है, तो अब इसे हम क्या कहते हैं? तो यहां पर तो कौन सा ग्रुप है, फिर हम कहते हैं पामिटोल. यहां पर कौन सा ग्रुप है? स्टीरोल. तो हमारा नॉमेनक्लेचर क्या हो जाता? पामिटाइल स्टीरोल फॉस्फेटिलकोलिन, ऐसा लिखते PSPC. और यहां पर भी स्टीराइल, यानी यहां पर भी 18 कार्बन की फैटी एसिड, यहां पर भी 18 कार्बन की फैटी एसिड, दोनों तरफ स्टीराइल ग्रुप ही होता, तो हम क्या कहते हैं? डाइस्टीरोल फॉस्फेटिलकोलिन. यहां पर एक 18 तरीके की फैटी एसिड होती, तो हम इसको क्या नाम देते? स्टीरोल ओलाइल, स्टीरोल ओलाइल फॉस्फेटिलकोलिन. इस तरीके से डाइओलाइल फॉस्फेटिलकोलिन भी हो सकता है. क्लियर? इन जनरल हम पढ़ चुके हैं कि अगर फैटी एसिड्स की चेन लेंथ ज्यादा हो और वहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ना हो, डबल बॉन्ड ना हो, तो ऐसी लिपिड्स का टीएम ज्यादा होता है. ऐसे लिपिड्स से कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं. देन another membrane lipid is phosphatidylethanol-amine, which is also trivially known by the name cephalin. ये भी सेफेलिन के नाम व लैसेथिन के नाम से जाना जाता है. फॉस्फेटिलकोलिन और phosphatidylethanol-amine is known by the cephalin. In structure there is very small difference. जहां पर ट्राई मिथाइल कंडीशन थी वो हट गई है, सिर्फ यहां पर इथेनॉल अमीन ही जुड़ा हुआ है. वहां पर ट्राई मिथाइल इथेनॉल अमीन था, यहां पर सिंपली इथेनॉल अमीन है. 3 मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है. बाकी स्ट्रक्चर वही है, ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप है और फिर इथेनॉल अमीन. चाहे फॉस्फेटिलकोलिन हो चाहे फॉस्फेटिलएथाइलअमीन हो, दोनों के अंदर नेट चार्ज अगर बात करें, नेट चार्ज एट pH 7 that will come out to be 0. Why 0? Because negative charge of phosphate group is counterbalanced by the positive charge which is present in ethanol amine. This is one of the most
abundant membrane lipid, especially in prokaryotes, स्पेशली अगर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें। देन मूविंग टू अनदर membrane phospholipid, that is a phosphatidylserine. The basal structure is same, glycerol जिसके साथ दो फैटी एसिड है और फिर ग्लिसरॉल के थर्ड OH पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ, एंड देन देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ वन अमीनो एसिड दैट इज सीरीन। आराम से पहचान सकते हैं ये अमीनो और ये एसिड ग्रुप वाला जिसके साइड चेन में CH2OH था, तो इस तरीके के अमीनो एसिड को सीरीन कहा जाता है। द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नाउ रेफर्ड टू एज फॉस्फेटिडाइलसीरीन, और जैसा स्टार्टिंग में बताया जा चुका है दैट द स्ट्रक्चर विच इज फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज रेफर्ड टू एज पोलर हेड, इसे पोलर हेड कहा जाएगा, और बाकी की दो नॉन पोलर टेल हो गए। इस तरीके से भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जा सकता है। सो हैविंग अ polar head and these are non-polar tail. Some important thing about the phosphatidylserine is phosphatidylserine, it is mostly present on cytosolic phase of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर फॉस्फोलिपिड है तो जनरली देखने को मिलता है कि वह साइटोसोलिक फेज पर दिखाई देगा, यानी दीज आर सपोज लेट्स से देयर आर वेरियस लिपिड्स, और इसमें अगर कहीं पर phosphatidylserine है तो you will find that exclusively these phosphatidylserine it is seen on the cytosolic phase. It is seen on cytosolic phase. Very rarely it is exposed to exterior of cell, and if it is exposed outside, then it is referred to as eat me signal. Basically it is a signal for a kind of programmed cell death referred to as apoptosis. Various phagocytotic cell, they can recognize this phosphatidylserine and will engulf those cells which are exposing phosphatidylserine to outside. जब तक सेल जिंदा है तब तक एक ट्रांसपोर्टर फ्लिपेज एटीपी को एनर्जी इस्तेमाल करते हुए अगर फॉस्फेटिडाइलसीरीन बाहर आ भी जाए तो उसको अंदर की तरफ फ्लिप कर देता है, पर अगर सेल डेथ हुई, एपोप्टोसिस होगी तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फ्लिपेज काम नहीं करेगा, और फ्लिपेज काम नहीं करेगा तो जो फॉस्फेटिडाइलसीरीन अंदर से अगर बाहर की तरफ आ भी गया तो उसको वापस अंदर की तरफ नहीं भेजा जाएगा, और फॉस्फेटिडाइलसीरीन बाहर की तरफ ही रहा तो इट कुड बी टेकन एज अ मार्कर फॉर एपोप्टोसिस। जैसे हम बात कर रहे थे कि देयर आर सम प्रोटीन्स which has high affinity for sugar or carbohydrate are referred to as lactin. इसी तरीके से there is some proteins which is having a very high affinity for some particular kind of lipid. For example, annexin 5 have high affinity
It has a very high affinity for phosphorylserine. So those cells which are under apoptic phase, they could be easily recognized in cell culture. सेल कल्चर में उनको आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि जो एपोप्टिक सेल्स होंगे उनमें फॉस्फोलिसरीन बाहर की तरफ होगा. तो उन सेल को कैसे पहचाने जहां पर फॉस्फोलिसरीन बाहर की तरफ है? द सिंपलेस्ट वे इज टू यूज अ प्रोटीन रेफर्ड टू एज एनेक्सिन 5 विच इज सपोज फ्लोरोसेंट टैग, ताकि जहां कहीं पर भी जिन सेल्स के ऊपर भी एनेक्सिन 5 जाकर बाइंड हो उन जगहों से फ्लोरोसेंट सिग्नल आना शुरू हो जाए, और इस तरीके से हम एपोप्टिक सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Phosphorylserine, since it is an amino acid, so ninhydrin will interact with a serine and will give a blue color. ज्यादातर बाकी जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं उनमें अमीनो एसिड नहीं होता और फ्री अल्फा अमीनो ग्रुप नहीं है, तो फिर निनहाइड्रिन रिएक्ट नहीं करेगा, पर फॉस्फोलिसरीन के साथ निनहाइड्रिन रिएक्ट करता है. फॉस्फोलिसरीन, इट इज वन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड membrane lipid. Why negatively charged membrane lipid? Because there one negative charge from this side and another negative charge from carboxyl side. There are two negative charges and there is only one positive charge, so net charge would be -1. And since this is a negatively charged membrane lipids, due to this a phase separation could be carried out by some cations like calcium. कैल्शियम क्या करेगा? उन सब नेगेटिवली चार्ज लिपिड्स को आपस में एग्रीगेट करा देगा. सो अगर खूब सारे नेगेटिव चार्ज लिपिड्स को एक साथ एग्रीगेट कराना है तो यू कैन कैरी आउट फेज सेपरेशन बाय सम काइंड ऑफ मेटल सॉल्ट. So these are some of the important points about the phosphorylserine. तो इन सबको नोट डाउन कर लो क्योंकि सब काम की बातें हैं. Then moving to another membrane lipid which is having an associated sugar, homocyclic ring sugar, that is phosphorilyl-inositol. So up to now what we have studied is phospholipid having associated some alcohol or amino alcohol, phospholipid which is having an associated amino acid, and now we are talking about a phospholipid is having some kind of homocyclic ring sugar. The sugar which is homocyclic, 6 carbon sugar, 1 2 3 4, you can nomenclate it like this: 1 2 3 4 5 6. This sugar is inositol. Sugar is inositol. So phosphatidic acid plus inositol would be referred to as phosphatidylinositol. इसके ऊपर भी नेट चार्ज is -1 at pH 7, क्योंकि ये एक माइनस चार्ज है यहाँ पर. फॉस्फोरिलसीरीन की तरफ phosphorilyl-inositol, it is also seen more toward cytosolic side.
फॉस्फोलिसिरीन जो नेगेटिव चार्ज है वो भी साइटोसोलिक साइड की तरफ दिखाई देता है, और फॉस्फाइल इनिसिटॉल है वह भी साइटोसोलिक साइड पर दिखाई। फॉस्फाइल इनिसिटॉल could be further converted into phosphoinositol could be further converted into phosphoinositol bisphosphate. So there is some PI4 kinase, there is some PI5 kinase. What these do is they add a phosphate group on 4th position and 5th position. So यहाँ पर भी phosphate group आकर जोड़ दिया गया, 5th position पर भी phosphate group जोड़ दिया गया। तो अब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज अ PIP2. PIP2 स्टैंड्स फॉर फॉस्फेटिडाइल इनिसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, in short PIP2. PIP2 is very important precursor for various secondary messengers. कई सारे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर्स के प्रिकर्सर के लिए काम करता है PIP2. दैट इज अगर PIP2 के ऊपर एक एंजाइम काम करे जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोलाइपेज सी यहां पर कहीं पर अटैक करता है इस जगह पर, और जैसे ही फॉस्फोलाइपेज सी इस जगह पर अटैक करेगा, फॉस्फोलिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम फॉस्फोलाइपेज, एंड फॉस्फोलाइपेज दे आर वेरी मच स्पेसिफिक। जैसे कि अगर इस पोजीशन पर कोई ब्रेक लगाता है तो उसे फॉस्फोलाइपेज A1 कहा जाएगा, सेकंड पोजीशन पर जो ब्रेक लगाता है फॉस्फोलाइपेज A2 कहा जाएगा, यहाँ पर ब्रेक लगाने वाला फॉस्फोलाइपेज C होगा, और इस जगह पर कट लगाने का काम फॉस्फोलाइपेज D करेगा। सो फॉस्फोलाइपेज सी अगर काम करता है तो हमारे पास एक इस तरीके की शुगर बन जाएगी, इनिसिटॉल शुगर बन जाएगी, जिसके ऊपर कितने फॉस्फेट आ जाएंगे, 3, इसलिए यू विल गेट अ सेकेंडरी मैसेंजर रेफर्ड टू एज IP3, एंड another secondary messenger what you get is diacylglycerol. You will get IP3 inositol 1,4,5 trisphosphate and diacylglycerol. और इसी PIP2 के ऊपर एक और एंजाइम काम करे जिसका नाम है PI3 काइनेज। अगर PI3 काइनेज काम करे तो एक और सेकेंडरी मैसेंजर बन जाएगा जिसका नाम है PIP3। सो द इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर्स जो कि PIP2 से बन सकते हैं, द इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर्स इंक्लूड PIP3 विच गिव्स अ सिग्नल फॉर सेल सर्वाइवल, एपोप्टोसिस को रोकने का काम करता है। IP3 कई सारे काम है, बट वन ऑफ द टास्क इज कैल्शियम चैनल को ओपन अप करता है। डाइएसिलग्लिसरॉल भी मल्टीपल टास्क करते हैं, बट वन ऑफ देम कुड बी एन एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज C. So this is about phosphoinositol, which may be connected to PIP2, and PIP2 basically it is a precursor for important secondary messengers like IP3, DAG, PIP3. Only IP3 is water soluble, so it is a water soluble and diffusible in cytosol. Well, diacylglycerol is amphipathic, so it will remain within a membrane. Amphipathic है, membrane में ही रहेगा। PIP3 भी amphipathic है,
and would is expected to seen only in cytosolic phase of the membrane. Got this? This is an important information about phosphatidylइनएसिटॉल. नोट डाउन कर लें अगर कोई इंफॉर्मेशन अब तक नहीं नोट किया तो. तो नोट डाउन कर लिया आपने. अब हम नेक्स्ट मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में बात करते हैं. अब तक हम बात कर चुके हैं फॉस्फाइल कोलिन के बारे में, फॉस्फाइल इथेनोलामीन के बारे में, उसके बाद हमने फॉस्फाइल सीरीन के बारे में बात की. ये डिस्कस कर रहे हैं हम फॉस्फाइल इनिसिटोल के बारे में. नाउ टॉकिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन लिपिड referred to as cardiolipin. Cardiolipin basically also referred to as diphosphatidylglycerol. Basically, two phosphatic acids, they are cross-linked by glycerol. What I want to say is, अगर स्ट्रक्चर देखें, so let's say this is one fatty acid, this is another fatty acid with a glycerol, this is the glycerol portion, and on this glycerol portion a phosphate group is associated. So this is one phosphatic acid, and similarly we can draw another phosphatic acid over here. Let's say this is another phosphate group attached to glycerol. So now these are two phosphatidic acid. Each डायग्रामेटिकली बात करें तो यहाँ पर ये एक टेल हो गई, ये दूसरी टेल हो गई, इसमें भी दो नॉन पोलर टेल हो गई, and each has a polar head group. So this is the glycerol, this is also a glycerol, and further there is acid phosphate group. So up to now this is the structure of two phosphatic acid, and what we are saying is that two phosphatic acids, they are cross linked by another glycerol. So we are now drawing another glycerol over here, and if we cross link it, now this is the membrane lipid. You can see that जैसे इसकी 4 टेल्स आ गई, 4 टेल आ गई, इस तरीके का ये यूनिक, वापस हम इसको वैलेंसी को एडजस्ट कर लेते हैं, इस ग्लिसरॉल है, सो दिस इज वन मोर ग्लिसरॉल एसोसिएट टू दिस, one more glycerol is added to this. Now the structure is referred to as diphosphatidylglycerol, where two phosphatic acids, they are cross linked by the glycerol. This cardiolipin,
or diphosphatidylglycerol is, we can say, a unique lipid of, it is a unique lipid of bacteria, या bacterial membrane and mitochondrial membrane, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का यूनिक लिपिड है। मींस ये प्लांट्स, एनिमल्स या फंगस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। कार्डियोलिपिन belongs to a prokaryotes, and we know that mitochondria also has a prokaryotic machinery, and that's why inner membrane of mitochondria can expected to have a unique lipid referred to as cardiolipin. But point to note, अब तक जितने भी membrane lipids थे उनमें एक फॉस्फेट ग्रुप और दो फैटी एसिड्स थे। यहां पर आप देख सकते हैं देयर आर टू फॉस्फेट ग्रुप, 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स एंड 4 फैटी एसिड्स। ओके, स्ट्रक्चर में नाउ नॉर्मली 2 फॉस्फेट ग्रुप, 2 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड होनी चाहिए। हर एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट, एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड होनी चाहिए, पर यहां पर ओरल स्ट्रक्चर के अंदर नाउ देयर आर 2 फॉस्फेट, 3 glycerol and 4 fatty acids. This is the structure of cardiolipin. It is believed that this cardiolipin provide a stability to prokaryotic membrane to certain extent. Then moving further, as we have already mentioned, नॉर्मल लिपिड्स को तोड़ने के लिए लाइपेज चाहिए, तो फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें फॉस्फोलाइपेज चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ फॉस्फोलाइपेज दे एक्ट एट सर्टेन स्पेसिफिक साइट, लाइक फॉस्फोलाइपेज A1 कट एट दिस कार्बन 1। जो कार्बन 1 के साथ जो एस्टर बॉन्ड है, इस जगह पर अगर कट लगाना है, इस एस्टर बॉन्ड को क्लीव करना है, तो यू हैव टू यूटिलाइज अ फॉस्फोलाइपेज A1। फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सेकंड पोजीशन पर जो एस्टर बॉन्ड क्लीव करके हटाता है, दैट इज फिजियोलॉजिकली मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉस्फोलाइपेज A2, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर जनरली जो फैटी एसिड होती है, जैसे हम कल डिस्कस कर चुके हैं, द सेकंड फैटी एसिड एट द सेकंड पोजीशन इज ऑफन एन आर्चिडोनिक एसिड। और फॉस्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी की वजह से एक बार आर्चिडोनिक एसिड रिलीज हुई, तो आर्चिडोनिक एसिड के ऊपर साइक्लोऑक्सीजिनेज वाला पाथ ने काम किया, तो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बेक्सिन का फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर इसके ऊपर लिपोऑक्सीजिनेज ने काम किया, उस एंजाइम ने काम किया, तो उसकी वजह से देयर कुड बी प्रोडक्शन ऑफ अनदर इकेनोसॉइड रेफर्ड टू एज ल्यूकोट्राइइन। पर मेम्ब्रेन लिपिड के सेकंड पोजीशन से इस फैटी एसिड को अलग करने का काम कौन करता है? Who perform the task of removing fatty acid from the second position? We will see that is a phospholipase A2. This phospholipase A2, it is present in an abundance in various snake venom, like rattlesnake, even Indian cobra has a abundance of phospholipase A2. Even there various bee and wasp toxins also has phospholipase A2, उनके पास भी phospholipase A2 होता है। So bee
या वास्प स्टिंग करने पर उस पर्टिकुलर लोकलाइज जगह पर जहां पर स्टिंग किया गया वहां पर देखेंगे आसपास इन्फ्लेमेशन आ जाता है. वाई देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑन दैट पर्टिकुलर साइड, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी सिग्नल. द रीजन इज दैट टॉक्सिन, it inject toxin has a phospholipase A2 which allow a release of arachidonic acid from membrane lipid. Arachidonic acid, it is acting as a local hormone. It is acted upon by this cyclooxygenase, प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टासाइक्लिन का फॉर्मेशन होता है और उस पर्टिकुलर लोकलाइज्ड जगह पर इंटेंस पेन और इन्फ्लेमेशन होगा. इवन स्नेक बाइट पर भी जिस जगह पर बाइट किया गया है वहां पर देयर वुड बी एन इंटेंस पेन एंड इन्फ्लेमेशन. एंड फर्दर अगर इस एक फैटी एसिड को यहां से हटा दी जाए तो जो पीछे स्ट्रक्चर बचा वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा. जो पीछे स्ट्रक्चर बचा तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिसमें अब एक ही फैटी एसिड एसोसिएटेड हो. कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पीछे बच जाएगा. यहाँ पर कोई फॉस्फेट ग्रुप आ गया और यहाँ पर कोई और पोलर ग्रुप हो सकता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा. So this is the structure which is expected to remain behind because we have removed this fatty acid. Second question, the structure which has been left behind is often referred to as lysophosphatidic acid. This is referred to as lysophosphatidic acid. Lysophosphatidic acid has one polar group, one phosphate group, one glycerol and one fatty acid. So everything is one. So there is a one polar group, there is one phosphate group, there is one glycerol and there is a one fatty acid. This is the structure of lysophosphatic acid. Normal phosphatic acid has two tails, means two membrane lipids. This structure which is having a single tail and a polar head. So this region from here to here, this is completely a polar head and having a one tail. This is a polar head and non-polar tail. This is a non-polar tail. This structure resembles like, it behaves like detergent and solubilize. It behaves like a detergent and solubilize membrane lipids. So जिन वेसल्स में या ब्लड में जहां टॉक्सिन इंजेक्ट किया गया वहां के वेसल्स के सेल्स की मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना शुरू हो सकती है और इंटेंसिव ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है आफ्टर अ स्नेक बाइट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. So pain, inflammation and even rupturing of blood vessels, dissolving of wall of blood vessels due to the structure which has left behind, that is lysophosphatidic acid. Phospholipase C के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि phospholipase C it cut prior to phosphate group and after phosphate group the cut is due to another phospholipase referred to as phospholipase D. Phospholipase B is comparatively non-specific. Phospholipase B can cut at this site and phospholipase B could cut at this site. So it is often not utilized. Now अब तक जो हम मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उन सब के अंदर फैटी एसिड के साथ और ग्लिसरॉल के बीच में एस्टर बॉन्ड था, बट एट वेरियस प्लेसेस इंस्टेड ऑफ अ
ester bond, especially at a carbon 1, there could be a ether bond. So C double bond O, this kind of bond is there, this is ester bond, and if it is like this O CH2 bond, then this is referred to as ether bond. So this is a ester and this is a ether bond. Ether bond is comparatively more resistant to hydrolysis as compared to the ester bond. So ether bond is more resistant to हाइड्रोलाइसिस। कई सारे नॉर्मल जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं उनके अंदर भी कार्बन 1 वाली पोजीशन पर एस्टर की बजाय मॉडिफाई कर या मोर एक्यूरेटली उसको रिड्यूस कर एस्टर को ईथर बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है टू एनहेंस अ स्टेबिलिटी। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ईथर बेस्ड glycerophospholipid is a signaling molecule referred to as platelet activating factor. It is a physiological mediator, a signaling molecule, as the name suggests, signaling molecule for the activation of platelets. In this platelet activating factor, what you find is that at carbon 2nd, although there is a ester bond and an acetyl group is associated, at a carbon 1, instead of ester bond, there is a ether linked alkyl chain. Then there is a phosphate group and then this is a choline group. The structure which is being drawn is of platelet activating factor. So platelet activating factor you will study in immunology. If it is in excess amount, can lead to an hypersensitive response. Excess amount में हो hypersensitive response carry out कर सकता है. Often it is seen in various bacterial infections. This hypersensitive response often referred to as septic shock syndrome. So when there are various excess of cell wall debris of bacteria like lipopolysaccharide etc., these cell wall debris of bacteria they behave as an endotoxins. ये endotoxins की तरह काम करते हैं. So cell wall debris from a dead bacteria they act as an endotoxin. They leads to the production of platelet activating factor. So dead bacteria बहुत ज़्यादा है तो cell wall debris blood में ज़्यादा होगी और cell wall debris बहुत ज़्यादा होने पर cell wall debris they will allow the for release of a platelet activating factor, and platelet activating factor finally if it is an excess amount will lead to a hypersensitive response referred to as septic shock syndrome. So this is an example of platelet activating factor is an example of ether based glycerophospholipids. Then the most
common examples of ether linked glycerophospholipids are the plasmalogens. Plasmalogens, they are normally like glycerol based phospholipids. Only the difference is at carbon 1, instead of a ester bond, you will find a ether bond. At carbon 2 there is a ester bond. Only at carbon number 1 there is a ether linked alkene. Structures would be referred to as plasmalogens. Almost it is believed that 30% of membrane lipids can be in form of plasmalogens. So 30% of membrane lipids can be in form of plasmalogens in higher eukaryotes. And this process occurs in peroxisome, that is ester linked is converted to a ether linked glycerophospholipids, and this specifically occurs in organelle peroxisome, where these plasmalogens they are being produced. So plasmalogens, they are like the normal membrane lipid, except that at carbon 1, instead of ester bond there is a ether bond. Ester linked phospholipids, they could be converted to a ether linked phospholipids. So this is about plasmalogens. अब तक हम बात कर रहे थे ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स के बारे में. कैटेगरी सेकंड, दैट इज ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड. और ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड का एक ही एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल क्या है? दैट इज गैलेक्टोलिपिड. है क्या कि फैटी एसिड्स, टू फैटी एसिड्स लिंक्ड बाय एस्टर बॉन्ड टू अ ग्लिसरॉल. द स्ट्रक्चर वुड बी रेफर्ड टू एज डाइएसिल ग्लिसरॉल. अगर यहाँ फॉस्फेट ग्रुप एसोसिएट होता है तो फिर फॉस्फोलिपिड कहते हैं, पर यहाँ पर फॉस्फोलिपिड नहीं एसोसिएट हुआ. देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ अ गैलेक्टोज, सिंपली शुगर डायरेक्टली आकर जुड़ गई. तो अब इसको फॉस्फोलिपिड तो नहीं कह सकते. दिस कैन नॉट बी रेफर्ड टू एज फॉस्फोलिपिड बिकॉज देयर इज नो फॉस्फेट ग्रुप. दिस इज अ ग्लाइकोलिपिड, एंड ग्लाइकोलिपिड में भी क्योंकि देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ अ गैलेक्टोज, so this would be referred to as a galactolipid. Galactolipid, it is present in the membrane of chloroplast and thylakoids within a chloroplast. Of plants. It may be a probably evolutionary reason that phosphate is often limiting in a soil.
So instead of using phosphate for making a lipids for a chloroplast or chloroplast inner membrane and thylakoid membrane, plants, they start utilizing a galactose, and galactose could be easily produced from a glucose. They can carry out a photosynthesis by which they can produce glucose, and then glucose could be converted into its apimeric form by an epimerase enzymes into galactose, and this galactose can be added to these lipids. Purpose of adding this, whether it is a phosphate group or sugar, is to make the bulky polar head group. तो प्लांट्स ने क्या किया कि फॉस्फेट की बजाय ज्यादा प्रेफर किसको कर दिया, गैलेक्टोज को, ताकि इससे, क्योंकि एवरी सेल हैज thousands of chloroplasts and every chloroplast has large number of thylakoid membrane, और उसके लिए फॉस्फोलिपिड की बजाय ज्यादा प्रेफर किया गया गैलेक्टोलिपिड्स. Although thylakoid membrane, beside having galactolipids, they also has a sulfolipids. So membrane of chloroplast, thylakoid membrane, they have a galactolipids, as well as you will find that here instead of galactose there could be sulfuric acid. If it is then they would be referred to as sulfolipids. So glycerol based glycolipids एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते. कहां पर ये देखने को मिल रहा है, प्लांट्स की मेम्ब्रेन. देन मूविंग फर्दर, द ब्रॉड कैटेगरी, सेकंड ब्रॉड कैटेगरी. अब तक हम ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड्स के बारे में बात कर रहे थे, ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लिसरॉल बेस्ड ग्लाइकोलिपिड. Now, moving to second broad category, that is sphingosine based lipids. और sphingosine based lipids में भी जो हम पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं, that is phosphosphingolipids. As I have referred earlier, जैसा क्लास में अभी हम स्टार्ट में बताया गया था कि sphingosine is basically 18 कार्बन पॉलीहाइड्रोक्सी अमीनो एल्कोहल. सो यहां पर स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर रखा है. द स्फिंगोसिन स्ट्रक्चर हैज बीन ड्रॉन, दैट इट इज हैविंग दिस 1 2 3 4 5 12 12 and 5 7 12 and 5 17 and 1 18 carbon, which is having more than one OH group. One OH group over here and another OH group was here, which is linked with a phosphate group, as well as an amino group. So that's why we are saying that sphingosine is a 18 carbon polyhydroxy amino alcohol. So you can again see that this is 2 OH group, this is one amino group, and then there is a 18 carbon. This is 1 2 3 4 5 6 7 7 and 10 17 and 1 18. And important thing is that स्फिंगोसिन के साथ जो एक फैटी एसिड आकर जुड़ रही है वह एस्टर बॉन्ड से नहीं जुड़ रही है. देयर इज ओनली वन फैटी एसिड, बट दिस वन फैटी एसिड इट लिंक्स थ्रू अ अमाइड बॉन्ड. तो हमेशा फैटी एसिड अल्कोहल के साथ एस्टर बॉन्ड से जुड़े कोई जरूरी नहीं. हम देखा ईथर बॉन्ड भी हो सकता है, और हम कह रहे हैं वहां पर इवन देयर कुड बी अ अमाइड बॉन्ड. This structure, that is one molecule of sphingosine plus one molecule of fatty acid, this structure would be referred to as ceramide. इस structure को अब हम ceramide कहते हैं. The basal structure which is observed on in all sphingolipids, that is ceramide. Ceramide resembles
diacylglycerol in स्ट्रक्चर के हिसाब से ये डाईएसिलग्लिसरॉल जैसा दिखता है। पर ध्यान रखें डाईएसिलग्लिसरॉल के अंदर एक फैटी एसिड नहीं है, वहां पर दो फैटी एसिड है, यहां पर एक फैटी एसिड है। सेकंड जो फैटी एसिड की तरह यहां पर बिहेव कर रहा है, दैट इज द एलिफेटिक चेन ऑफ स्फिंगोसिन इटसेल्फ। स्फिंगोसिन की खुद की ही एक एलिफेटिक टेल फैटी एसिड की तरह बिहेव कर रही है। सो स्फिंगोसिन बेस्ड जो हमारा फॉस्फोलिपिड है उसका एक ही एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज अ स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन, it was observed first in the myelin sheath of neuron। myelin sheath of neurons में ये abundant था। ध्यान रखें जितने भी स्फिंगोलिपिड्स हम पढ़ने वाले हैं, दे आर सीन इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जनरली देखने को नहीं मिलेगा। सो वेरियस सेल्स membrane has sphingomyelin। So sphingomyelin has a sphingosine unit and one fatty acid associated to this. This is ceramide. Then there is a phosphate group and one choline group. So we can say that sphingomyelin is ceramide plus phosphocholine. So ceramide plus phosphocholine becomes sphingomyelin. Sphingomyelin, it is more abundant on extracellular phase of plasma membrane. That is, we studied in cell biology, that is membrane phospholipids has partial asymmetry. That is, membrane lipids are present on outside as well as in inner face, but the phospholipid which is on exoplasmic side is somewhat different in composition, or as well as the phospholipid composition on the cytosolic phase is somewhat different. That is, what you find is, suppose this is the cytosol, what you will find is phosphatidylcholine and phosphatidylcholine, more importantly sphingomyelin. These are the two membrane lipids which are more observed on the extracellular side, while the membrane lipid like phosphatidylserine, phosphatidylinositol, they are more seen on the cytosolic phase. We are not saying that they are exclusively on this side. So there are some phospholipids, they are on more on outer side, and these include phosphatidylcholine and sphingomyelin.
While on cytosolic phase, you can expect a phosphorylserine and phosphoryl more in a higher proportion. Phosphorylcholine and sphingomyelin both are seen on एक्सोप्लाज्मिक फेस. जैसे हम देखें ना, फॉस्फोकोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन both are more seen on the outer phase, exoplasmic side. They have us, both of them, they have us have similar type of head group. That is, at the terminus you will find a phosphocholine, but there is major difference in their architecture. That is, phosphorylcholine will have 2 fatty acids, 1 glycerol, while sphingomyelin will have 1 fatty acid, 1 sphingosine, 1 phosphate and 1 choline. So, what is the difference? That if it is a phosphorylcholine, it will have 1 choline, 1 phosphate, 1 glycerol and 2 fatty acids. And if it is sphingomyelin, then it will have 1 choline, 1 phosphate, 1 sphingosine and 1 fatty acids. Okay. Although they may superficially look very much similar. Moving further, most of जो sphingosine based लिपिड्स होते हैं वह ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं. So now we are talking about glycosphingolipids. ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स को भी जैसे हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था, सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड, ऑल्सो ग्लोबोसाइड भी कह सकते हैं. तो सेरिब्रोसाइड में क्या है? इट इज हैविंग अ सीरेमाइड structure plus some monosaccharide, साथ में कोई मोनोसैकराइड. दैट इज, सीरेमाइड का कहने का मतलब क्या है? जहां पर एक फैटी एसिड हो और एक स्फिंगोसिन हो, यहां तक स्ट्रक्चर को हम सीरेमाइड कहेंगे. और फिर कोई एक सिंगल शुगर यूनिट आकर जुड़ी हुई, जैसे इस शुगर को आप आराम से पहचान सकते हो, ये गैलेक्टोज है जो यहां पर एसोसिएटेड है. कैसे पहचाना? कि 4th पोजीशन पर OH ग्रुप अबव द प्लेन, तो इट इज अ गैलेक्टोज. तो जो ये स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है, दिस इज ऑफ गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड. इस वजह से ग्लूकोज होता तो उसे हम ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड कह देते. इट वुड हैव बीन रेफर्ड टू एज ग्लूको सेरिब्रोसाइड, गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड. So this is the simple sphingosine based glycolipid, but most of the sphingosine based glycolipids, they have a associated oligosaccharide to the polar head. So if there are more than one sugar, they are associated, then it is referred to as globoside. For example, here you can see 1, 2, 3, 4, 5, more than one sugars, they are associated.
So instead of cerebroside, now it is referred to as globoside. ग्लोबोसाइड में ही इंपॉर्टेंट तरीके के जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, दीज आर रेफर्ड टू एज गैंग्लियोसाइट्स. गैंग्लियोसाइट्स उन्हें कहा जाएगा, ऐसे ग्लोबोसाइट्स जिसमें एक या एक से ज्यादा सियालिक एसिड हो. जैसे यहां पर ये सियालिक एसिड बनी हुई है. वन और मोर देन वन इफ अ सियालिक एसिड इज देयर. सियालिक एसिड हम कल बात कर चुके हैं. सियालिक एसिड इज बेसिकली एन एसिटाइल न्यूरा अमीनिक एसिड. तो वन और मोर सियालिक एसिड अगर एसोसिएट हो, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, एक से ज्यादा शुगर होगी. जैसे कि यहां पर जो शुगर एसोसिएट की गई है वह ग्लूकोज ऐड कर दी गई है. So there are more than one type of sugar. For example, this first sugar which is there is glucose. सेकंड शुगर जो यहाँ पर एसोसिएट की गई है वह भी ग्लूकोज है. थर्ड शुगर जो यहाँ पर एसोसिएट की गई है सपोज वह गैलेक्टोज है. फोर्थ शुगर जो हमने यहाँ पर एसोसिएट की है लेट्स से ये भी गैलेक्टोज है. So there are two glucose and two galactose. Besides this, there is another sugar that is sialic acid. If one or more sialic acid is present, then they would be referred to as ganglioside. And specifically, if there is only one gangliosides, अगर gangliosides में if there is only one molecule of sialic acid, then such gangliosides would be referred to as GM gangliosides. अगर यानी गैंग्लियोसाइट्स जो मोनोसियालेट हो, मोनोसियालेट मीन्स इफ देयर इज ओनली वन सियालिक एसिड, देन दे आर रेफर्ड टू एज जीएम गैंग्लियोसाइट्स. So GM gangliosides, depending upon the different number of sugars, they could be separated electrophoretically. On basis of this, they have been named as GM1 ganglioside, GM2 ganglioside, GM3 ganglioside, and so on. So for example, in a GM1 ganglioside, there is one sialic acid, there are two glucose, and then there are two galactose. These GM gangliosides, they are physiologically very important, as well as important from a host pathogen interaction as well. For example, cholera toxin recognize GM1 ganglioside as receptor. उन सेल के अंदर कॉलेरा टॉक्सिन, यानी कॉलेरा टॉक्सिन इज अ काइंड ऑफ एंट्रोटॉक्सिन. दिस एंट्रोटॉक्सिन मेनली अफेक्ट द इंटेस्टाइनल सेल, जहां से ये बहुत ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस कराते हैं. ये मेनली उन सेल्स को टारगेट कर रहे हैं जिनके बाहर की तरफ जीएम गैंग्लियोसाइट्स देखने को मिलते हैं. उस तरीके से जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वह उन सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है जिनके ऊपर GM3 तरीके के गैंग्लियोसाइट्स हो. तो दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस. So these GM gangliosides, they act as a receptor for important toxins and viruses. They may also play a role in cell-to-cell interactions. These, whether it is a cerebroside or these are globosides, they show a partial, whether it is a cerebroside or globoside, they show a complete asymmetry. Complete asymmetry means they are seen only on exoplasmic side of membrane. जो भी शुगर वाले जितने भी लिपिड्स हैं वो कभी साइटोसोलिक फेस पर नहीं होंगे, ये हमेशा
बार की तरफ होंगे, चाहे सिंगल शुगर जुड़ी हुई हो, चाहे इनके ऊपर मल्टीपल शुगर जुड़ी हुई हो। जो ग्लाइकोसाइलेटेड फ्रैक्शंस हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, वह हमेशा ही बार की तरफ होंगे, जबकि बाकी फॉस्फोलिपिड्स आउटर साइड में भी हो सकते हैं, इनर साइड पे, और दो पार्शियल असिमेट्री की हमने बात की, बट ग्लाइकोलिपिड्स दे आर ऑब्जर्व्ड ऑन एक्सोप्लाज्मिक साइड. So this is about the globocyte or gangliosides. Okay. तो उसको भी आप एक बार के लिए नोट डाउन कर लो. So single sugar, cerebrocyte, multiple sugars, globocyte, and out of multiple sugar there are one or more sialic acid, ganglioside. Specifically, there is one sialic acid, then GM1 ganglioside. The membrane of Archaebacteria has a unique lipids. सो ज्यादातर जगहों पर हम देखते हैं कि इस तरीके से बाई लैमिलर स्ट्रक्चर, लिपिड्स इज ऑन दिस साइड एंड लिपिड इज ऑन दिस साइड, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है. पर आर्की बैक्टीरिया में इस तरह के लिपिड्स के अलावा इस तरह के लिपिड्स भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे टेल कंटिन्यूअस है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है. बिसाइड दीज नॉर्मल लिपिड्स यू कैन फाइंड this condition as well. This is very surprising. Such kind of lipids which are spanning from one side to another side are, you can say, unique lipids of an archaebacteria, and these are referred to as glycerol dialkyl glycerol tetraethers. So another important thing is that first there is another important thing is that there is a ether bond. Another important thing is that if glycerol is there, glycerol could be in a L form, which is very rare, because ज्यादातर जगहों पर जो glycerol इस्तेमाल होता है वह D form में होता है. So there are various unique things about the archaebacteria. Such kind of lipids which are spanning from one side to another side, they are seen. There is a ether bond. And glycerol, instead of D form, mainly it is seen in L form. So you can see that there are two alkyl chain. This is an alkyl chain, this is another alkyl chain. And you can see one more thing, that is you can find a branched alkyl chain. There is a branched alkyl chain. So there are two alkyl, that's why dialkyl. Glycerol on this side as well as a glycerol on this side. So glycerol, dialkyl, glycerol. And on both the side of glycerol, it is linked by a ether bond. So that's why it has been named as tetraether. So this is also glycerol and this is also glycerol. Further, glycerol may have associated sugars, or glycerol may have a phosphate group, and then some other molecule may be there. So you can note down only one point over here, that archaebacterial membrane lipids, they are somewhat unique, that they may have a branched fatty acids, they have a ether bond, glycerol may be in a L form. The unique lipids are often referred to as glycerol dialkyl glycerol tetraethers. Then sometime the terpenes are also classified among the lipids. Terpenes, they do not have a true character which has to be classified
इन अ ग्रुप ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स वाले कैटेगरी में लाई करने के लिए पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल और फैटी एसिड होनी चाहिए, पर यहां पर न तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है न ही फैटी एसिड। बेसिकली दे आर कॉम्बिनेशंस ऑफ आइसोप्रीन। एक 5 कार्बन का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लें, इस तरीके के स्ट्रक्चर से ही बार बार इस तरीके का बेसल स्ट्रक्चर जो बार बार रिपीट होगा 5 कार्बन का, दैट इज रेफर टू एज आइसोप्रीन। इस 5 कार्बन के स्ट्रक्चर के ही जो पॉलीमर 5 + 5 10 कार्बन हो जाएगा, 20 कार्बन हो जाएगा। इनके जो हाई लेवल स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर रेफर टू एज टर्पीन्स। सो बेसल स्ट्रक्चर is isoprene, and we'll study in cholesterol biosynthesis. One of the form is isopentyl pyrophosphate. So 10 carbon terpenes you will study in the plant physiology are referred to as monoterpenes. There are various examples. One of them is the menthol or limnonine. So mentha smell or lemon smell. So various, you can say, essential oils, aromatic oils, they are monoterpenes. 15 carbon terpenes are referred to as sesquiterpene, and you can take an example of one sesquiterpene, again a plant, that is abscisic acid, a important hormone. 20 carbon terpene is referred to as diterpene, and we can take an example of this as well, that is gibberellic acid, GA3, a plant hormone. 30 carbon terpene are referred to as triterpene. Example could be steroids. Most of the sterols and steroids, they fall to this category. 40 carbon terpene are referred to as tetraterpene, referred to as tetraterpene. As an example, we can take anthocyanin. And if there are more than 40 carbon, then we could name them as a polyterpene. As an example, we can take ubiquinone, or we can take an example of dolicol, etc. So they have a basal 5 carbon repeating unit, and this basal 5 carbon repeating unit is referred to as isoprene. From animal biochemistry point of view, one terpene which is of some physiological significance is a triterpene, that is steroids. And one such triterpene which is of very importance, high importance, especially for biochemistry and physiology of animals, that is cholesterol. Cholesterol is basically 27 carbon, it is a 27 carbon triterpene. तो 30 कार्बन के टर्पीन से ही ये डिराइव हुआ है 27 कार्बन। कोलेस्ट्रॉल, इट इज अ यूनिक कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। स्टीरोल है तो कुछ अलग तरीके का, स्टिग्मोस्टिरोल, ब्रेसिकोस्टिरोल, अर्गोस्टिरोल, बट कोलेस्टेरॉल इज अ यूनिक स्टिरोल ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन एंड it is symmetrically distributed. And from symmetrically distributed, what we mean that it could be seen on exoplasmic side as well as on the cytosolic phase.
दोनों तरफ ये देखने को मिल सकता है। द मेजर फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, टेम्परेचर बफर की तरह काम करता है, यानी टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो मेम्ब्रेन को जेल वाली स्टेट में जाने से रोकता है, और टेम्परेचर बढ़ जाए तो अनकंट्रोल्ड जो फ्लूइडिटी हो सकती है उसको भी वापस कंट्रोल करता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज कंट्रोलिंग the rapid gel to salt transitions which are observed when there is a change in temperature। जब कभी टेम्परेचर में चेंज करें तो मेम्ब्रेन लिपिड्स जेल अचानक फ्लूइड स्टेट में आ सकती है और फ्लूइड वाली स्टेट अचानक जेल स्टेट में जा सकती है अगर हम एब्रप्ट टेम्परेचर को चेंज करें। बट कोलेस्ट्रॉल अगर है तो टेम्परेचर की एक लॉन्ग रेंज तक भी मेम्ब्रेन लिपिड्स के फ्लूइडिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी कंडीशन है वैसी बनी रहे या बनी रहे। कोलेस्ट्रॉल टीएम को अफेक्ट, थर्मल मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ ट्रांजिशन को अफेक्ट करता है। तेजी से जो जेल सॉल्ट ट्रांजिशंस हो रहे थे उनको रोकने का काम करता है। मेम्ब्रेन लिपिड्स का टीएम वापस वही फैटी एसिड की चेन लेंथ पर और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इट इज ऑफ 27 कार्बन। ये आप देख रहे हैं देयर आर ए बी सी एंड डी, दीज आर द 4 यू कैन से ए बी सी and D, these are 4 planar ring. It has a small OH group, a polar OH group, and a non-polar tail which remain away from the water, while this OH group it is toward the water. In other words, this cholesterol is also an amphipathic molecule. ये भी amphipathic molecule. As a result of this, let's say this is the membrane lipids. और मेम्ब्रेन लिपिड्स के बीच में दोनों ही साइड में इधर की तरफ भी कोलेस्ट्रॉल फिट हो सकता है और इधर की तरफ भी कोलेस्ट्रॉल आकर फिट हो सकता है, बिकॉज इट इज हैविंग अ पोलर हेड एंड अ नॉन पोलर टेल। Cholesterol in general, we study cell biology, cholesterol they have a high affinity for sphingolipids and thus can form the lipid rafts which you discuss in cell biology. So they are having a high affinity for sphingolipids, and this tight aggregate of sphingolipid and cholesterol which move as a unisome, एक साथ एग्रीगेट इधर से उधर मूव करता है, उसे लिपिड रैफ्ट कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल के इसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे दिस इज एन प्रिकर्सर ऑफ वेरियस स्टेरॉइड हार्मोन्स, कई सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए ये प्रिकर्सर का काम करता है। देन कोलेस्ट्रॉल का किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में, ऑल्दो यू विल स्टडी it in detail in animal physiology। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू यहां पर दे रहा हूं। कोलेस्ट्रॉल को सीधा ब्लड में डंप नहीं किया जाता, क्योंकि अगर सीधा ब्लड में डंप करेंगे तो वेसल्स में एग्रीगेट हो सकता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, जो भी कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को फैटी एसिड के साथ जुड़कर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के फॉर्म में रखा जाता है। सो दीज आर मोस्ट ऑफ
cholesterol, it is present in form of cholesterol esters. Cholesterol esters a completely नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अब ये एम्फीपैथिक नहीं रहे क्योंकि जो OH ग्रुप है वहां पर फैटी एसिड जोड़ दी। जो यहां पर OH ग्रुप है, अगर यहां पर एक फैटी एसिड C डबल बॉन्ड OH यहां से एक फैटी एसिड जोड़ दी गई तो अब इसे कहा जाएगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ओके, तो और इन कोलेस्ट्रॉल एस्टर के चारों तरफ देयर आर सम प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की कोटिंग की जाती है, प्रोटीन्स का एग्रीगेट होता है। इन प्रोटीन्स वाले पार्ट को एपोलिपोप्रोटीन कहा जाता है। These are referred to as apolipoprotein. This apolipoprotein, cholesterol esters and various other components, जो भी लिपिड soluble molecules है, कई सारी चीजें अंदर और जैसे विटामिन A, D, E, K, there could be various free fatty acids, etc. It may also have various free fatty acids and various vitamin A, D, E, K. This whole assembly is referred to as lipoprotein. इस असेंबली को लिपोप्रोटीन कहा जाता है। So there are different types of lipoproteins and they could be separated on basis of their density. So लिपोप्रोटीन के अंदर अगर कोई लिपोप्रोटीन है उसमें बेसिकली दो प्रोपोर्शन है, लिपिड वाला पार्ट भी है और प्रोटीन वाला पार्ट भी है। अगर लिपिड वाला पार्ट ज्यादा हो, प्रोटीन वाला पार्ट कम हो तो लो डेंसिटी होगी, और अगर लिपिड वाला पार्ट कम हो, प्रोटीन वाला पार्ट बढ़ जाए तो डेंसिटी हाई हो जाएगी। तो ऐसे लिपोप्रोटीन जिसके अंदर लिपिड का कंपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, लिपिड बहुत ज्यादा होता है, उन्हें हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कह सकते हैं, क्योंकि लिपिड से वो डेंसिटी को कम करते हैं, प्रोटीन और डेंसिटी को जनरली बढ़ाते हैं। ओके, सो लो डेंसिटी में लिपिड्स की अमाउंट ज्यादा, हाई डेंसिटी में लिपिड की अमाउंट कम है और प्रोटीन की अमाउंट, प्रोटीन का प्रोपोर्शन है कंपैरेटिवली ज्यादा। नाउ लीवर जहां पर कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती है, लीवर से जो कुछ भी कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसाइज होता है, लीवर उसको ब्लड में डंप करता है विद वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन। उस दौरान लिपिड्स बहुत ज्यादा एबंडेंट होते हैं, तो जो हमारे पास पहला पार्टिकल बना उसे कहा जाता है VLDL, वेरी डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये ब्लड में ट्रेवल करता है और जैसे जैसे ये ब्लड में ट्रेवल करता है इसमें से फ्री फैटी एसिड्स हटती जाती है। जिन सेल्स को फ्री फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट है वो फ्री फैटी एसिड्स हटती जाएगी। जैसे जैसे लिपिड का प्रोपोर्शन कम होता जाएगा वैसे डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। ये वेरी लो डेंसिटी से आइडियल यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो सकता है, और फैटी एसिड्स इसमें से हटते गए और फ्री फैटी एसिड्स हटते गए, तो नाउ फाइनली इट इज कन्वर्ट टू अ LDL। सो जब ये VLDL था तो फैटी एसिड्स भी थे और कोलेस्ट्रॉल भी था, पर LDL वाली फॉर्म में आता थे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहा, फैटी एसिड्स की प्रोपोर्शन बहुत कम हो गई। दिस इज कॉल्ड एज LDL। जिन सेल्स को कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है वह अपने सेल सरफेस के ऊपर LDL रिसेप्टर शो करते हैं, दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग द LDL रिसेप्टर। सो LDL रिसेप्टर डिस्प्ले करते हैं, जहां पर ये LDL पार्टिकल आकर बाइंड हो जाएगा और ये सेल बाहर से कोलेस्ट्रॉल को अपटेक कर देगा। तो जो भी सेल जिनको मेम्ब्रेन के लिए, स्टेरॉइड हार्मोन बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए वह इस LDL को अपटेक कर लेते हैं। पर लीवर जरूरत से ज्यादा LDL VLDL बनाए तो जरूरत से ज्यादा LDL होगा, और एक्सेस LDL होने पर, जरूरत से ज्यादा LDL होने पर, अनकंट्रोल्ड अमाउंट में LDL बनने पर ये ब्लड में स्पेशली बहुत
जो स्मॉल नैरो कैपलरीज है वहां पर जाकर ये एग्रीगेट होने शुरू होंगे, फंसने शुरू होंगे, ट्रैफिक जैम होगा, कॉरोनरी का ब्लॉकेज होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, हार्ट अटैक होगा। ऐसा आप एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। सो liver produces these them and the target cells they utilize them. But if the production is more than the requirement, under such conditions LDL may start accumulating in the blood and can lead to an atherosclerosis. The excess of an cholesterol could be packaged into another lipoprotein particle referred to as HDL, high density lipoprotein, and this HDL could be transported back to the liver, where in liver this excess cholesterol or HDL cholesterol could be converted to a bile acids. So that we will study little bit in more detail when we will study the cholesterol metabolism, and you will study the complete physiology when you will study an animal physiology. So this is how these lipids they are being, or cholesterol is being mainly transported. The fatty acids they are transported mainly in a bound form with the albumin protein or with these lipoprotein particles. You can also note down some diseases which are related with the lipid storage disease. You will study them again in a cell biology. So most often what happens is that anything which is unwanted and it is outside the cell, it was engulfed by the cell, and finally this endosome which is engulfed by the cell, it is sent to or dispatched to the lysosome. So everything will move to the lysosome, and a lysosome it has various hydrolytic enzymes. So some bacteria it is being engulfed by, let's say, phagocytotic cell, or any unwanted cell debris they have been taken up by the phagocytotic cell. So this is a phagocytotic cell. If some enzyme it is missing in a lysosome, then the content will reach to the lysosome, but it will start accumulating to in a lysosome, and such diseases would be referred to as lysosome storage disease. And one such example of, so lipid storage disease may be, we are mainly talking about a lysosomal storage disease, and most of them these are some whatever example we are saying, name them as a genetic disorder. Niemann-Pick disease is basically due to a missing enzyme referred to as sphingomyelinase. As a result of this, sphingomyelins they start accumulating in a higher proportion. Sphingomyelinase it is an autosomal recessive disorder. AR stands for autosomal recessive. XR would be referred to as X-linked recessive. Similarly, Gaucher disease is due to an absence of glucocerebrosidase. As a result of this, glucocerebrosides they start accumulating in lysosome. This is also an autosomal recessive disorder. Tay-Sachs disease is due to an defective hexaminidase enzyme. Hexaminidase is also referred to as GM2 ganglioside. So if GM2 ganglioside is absent or hexaminidase is absent, it leads to another autosomal recessive disorder referred to as Tay-Sachs disease. So out of these, none of them is basically X-linked recessive. So XR हमने हटा दिया. All three diseases which are mentioned over here, they are autosomal recessive. Getting point? तो लिपिड स्टोरेज से स्पेशली लाइजोम के अंदर 3 डिसऑर्डर्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, नीमैन-पिक, गाउचर एंड टे-सैक
disease. Now, having a little bit idea about that how we work with the lipid, जैसे हम कल ग्लाइकोबायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे ही how we work with a lipid biology. The first step in a lipid biology or working with the lipid is a lipid extraction. Generally, carbohydrates, they are polar, so they can be easily extracted in a polar solvent. But most of the lipids, they are non-polar. So we have to use some kind of non-polar solvents. So most often some kind of non-polar solvents could be utilized, like acetone, chloroform, etc. And for some amphipathic solutes, for amphipathic lipids, we often use some solvents like methanol. So acetone, chloroform, methanol, etc. जो सबसे कॉमन तरीका है कि जैसे प्लांट सोर्स से या किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल से हमें लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो जो हमने होमोजेनाइज करने के लिए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, वाटर इन अ रेशियो ऑफ 1:2:0.8. और इस एक्सट्रैक्शन मिक्सचर को में आप देखेंगे कि एक्वस फेस है वह ऊपर की तरफ आ जाती है, और जो मीथेनॉल वाली फेस है वह जैसे जैसे वाटर ऐड करते जाएंगे और वाटर ऐड करते जाएंगे, एक्वस फेस, मीथेनॉल फेस ऊपर की तरफ आती जाएगी और क्लोरोफॉर्म वाली फेस है वह नीचे की तरफ. ज्यादातर जो लिपिड्स हैं दीज वुड बी देयर इन अ क्लोरोफॉर्म फेस. यहां से हम मीथेनॉल और वाटर को रिमूव कर सकते हैं. जो ऑर्गेनिक फेज है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाली, उसको यूटिलाइज करेंगे अगर हमें लिपिड्स के साथ काम करना है तो. सेपरेशन के लिए जो डिफरेंट लेट्स से फॉस्फोराइलसीन, फॉस्फोराइलकोलिन, स्फिनोमाइलिन, डिफरेंट तरीके के लिपिड्स. द सिंपलेस्ट अप्रोच व्हाट वी कैन यूटिलाइज इज TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जहां पर हम लिपिड के सैंपल को अप्लाई कर सकते हैं. सो हियर वी आर अप्लाइंग यू कैन सी द लिपिड सैंपल. दिस इज द स्टेशनरी phase and this is the mobile phase. Most often the methanol is utilized as a mobile phase. Methanol, acetonitrile, etc. After some time what happens is that as mobile phase it travels, it also take a lipid with them, and lipids they are separated. Because silica it is a, so this is the mobile phase, it has traveled from this distance to this distance, and since the silica is a polar charged stationary phase, so it will absorb more with a polar molecule. Neutral lipids they will not be retarded, so they would be traveling a maximum distance followed by uncharged polar lipid, and the least distance would be traveled by the charged polar lipids because they will strongly interact with the charged stationary phase. So neutral lipids means it could be, for example, it could be triacyl glycerol. It may travel longest distance. Polar lipids means it could be diacyl glycerol, which will comparatively travel lesser distance, and charged polar lipids could be like phosphatidyl
serine or phosphoinositol, they will travel least in a column, sorry, in a stationary phase composed of silica. Lipids naturally they are not colored, but we can use some treatment, like we can give an iodine fumes, ताकि जहां कहीं पर भी लिपिड्स हो, लिपिड्स वाला रीजन ब्लू हो जाएगा. स्पेशली आयोडीन फ्यूम्स, दे आर एब्जॉर्ब wherever there would be a double bond or unsaturation. Or even we can utilize a rhodamine, a kind of, you can say, fluorescent dye for investigating the lipids. Further higher approach could be the column chromatography. Again you can take a silica column and you can load a sample mixture over here and allow a mobile phase to travel, and it will also take the sample molecules with it. Again, since the mobile phase is charged, so the fast movement would be of neutral lipids because they will not interact with the stationary phase. Then polar lipids, and least distance traveled would be by, or maximum time to get elute from the column would be taken up by the charged lipids. Charged lipids सबसे लास्ट में आएंगे क्योंकि स्टेशनरी फेज उनको सबसे ज्यादा रोकेगी. Okay, even although it is not mentioned over here, but even you can use a reverse phase chromatography when we'll study the chromatography. In reverse phase chromatography, or hydrophobic chromatography, what happens is reverse phase और hydrophobic chromatography, उनमें क्या होता है कि here stationary phase is non-polar, जबकि इस केस में स्टेशनरी फेज सिलिका कॉलम पोलार था. तो स्टेशनरी फेज अगर नॉन पोलार है तो उस कंडीशन में फर्स्ट जो इल्यूशन प्रोफाइल की अगर बात करें वहां पर कि इल्यूशन कैसे होगा, बार एग्जिट कैसे होगा, तो इल्यूशन में जो सबसे फर्स्ट बार निकल कर आएंगे दीज वुड बी द चार्ज्ड लिपिड्स. सेकंड नंबर पर बार हो सकते हैं पोलार लिपिड्स, और सबसे लास्ट के अंदर इल्यूट होंगे न्यूट्रल लिपिड्स. इफ इट इज अ केस ऑफ, नाम से बताया रिवर्स फेज, एकदम रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी. देन फॉर बेटर ऑटोमेशन and separation of lipids, you can utilize a gas liquid chromatography. There are some neutral gas like helium is being used as a mobile phase. Sample, that is lipids, it is mixed with some kind of organic solvents and then it is injected over here and then it is heated so as to convert this into a vapors, and then with mobile phase it travels through the column and different lipids they travel to the different distance depending upon their tendency to get absorbed with this stationary phase. That will study gas liquid chromatography, but we can say comparatively better version for the separation of lipid could be, and if the lipids they are in a very low amount, you can go for a gas liquid chromatography, where the mobile phase is filled with a high density liquid. So there is, in a column there is some kind of liquid. Then if you want to know the mass and the position of double bonds, then best approach is mass spectrometry,
that whether it is a 12 carbon or 16 carbon fatty acid, whether it is saturated or unsaturated fatty acid, you can utilize a technique referred to as mass spectrometry. So these are some of the techniques which are routinely utilized for lipid biology, for lipid profiling, separation, identification, etc. So with this we complete the topic of lipids. Another important and interesting topic of biochemistry is nucleotide and nucleic acids. So first focusing on nucleotides, and later on we'll move to the different kind of nucleic acids like DNA and RNA. Nucleotides, they have various important functions. अगर हम न्यूक्लियोटाइड के ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड एज एन एनर्जी करेंसी. फॉर एग्जांपल एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, इन्हें एनर्जी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. These nucleotides, they could be utilized as a, you can say, precursor for coenzymes like NAD, FAD, etc. or even NADP. They are nucleotide derivatives. Then various nucleotides, they could act as a secondary messenger. They can act as a secondary messengers like cyclic AMP, cyclic GMP. Even primary messenger की तरह भी काम कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड. You will study in a developmental biology that cyclic AMP, which is routinely secondary messenger, can act as a primary messenger in the aggregation of dictyostelium. डिक्टियोस्टिलम के एग्रीगेशन, आपस में वो पास में आते हैं, उनके लिए सिग्नल चाहिए, दैट इज साइक्लिक AMP. Nucleotides, they may be playing a important role for the enzyme activities. तो कई सारी एंजाइम को अपना काम करने के लिए एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है. सेम, so it is a, we can say, modified nucleotide. Various synthetic nucleotides, are used as a drug, or we can say medicines, for treatment of various diseases like AZT and DDI, azithromycin and dideoxyinosine, inhibit the activity of reverse transcriptase. Besides this, they are the monomeric unit for nucleic acids. For example, ribonucleotide, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में पॉलीमराइज होकर आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वह आपस में पॉलीमराइज होकर they will form the DNA. So nucleotides, they are not simply a precursor for a nucleic acids. Besides this, they perform various other tasks as well. वह और भी कई सारे important काम करते हैं. अब किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर there are 3
डिफरेंट कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोटाइड हैज नाइट्रोजीनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस वापस दो तरीके के हो सकते हैं, इट कुड बी प्यूरीन एंड पैरामिडीन। प्यूरीन को सिंबल आर से रिप्रेजेंट किया था और पैरामिडीन को सिंबल वाई से। तो हम सबसे पहले यहां पर जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज अबाउट प्यूरीन। ये प्यूरीन के स्ट्रक्चर्स हैं। प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। आप देखें कि दो नाइट्रोजन इस 6 मेंबर्ड रिंग में भी आ रहे हैं, दो नाइट्रोजन इस 5 मेंबर्ड रिंग में भी आ रहे हैं। सो देयर आर टू रिंग्स, one of them could be referred to as, there are two rings but one would be referred to as diazine ring. So the 6 membered ring is referred to as diazine ring, and this 5 membered ring is referred to as imidazole ring. So there is one 6 membered ring and there is one 5 membered ring referred to as diazine, because there are two nitrogen, and 5 membered ring is referred to as imidazole ring. नाउ प्यूरिन्स के अंदर जो बेसल 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, उसके अलावा अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो दिस इज रेफर्ड टू एज 6 amino purine, and 6 amino purine is basically adenine. So you write down adenine is 6 amino purine. The numbering in the purine in 6 membered ring is done in a clockwise direction. You can see it is in clockwise direction in 6 membered ring. This is first, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth, and in 5 membered ring it is in, so 6 membered ring it is the anti-clockwise direction, and in 5 membered ring it is in the clockwise direction. This is how we go for a number. That is here again in anti-clockwise, this is 1, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth, this is seventh, this is eighth, and this is ninth. This is how we carry out a numbering. So अमीनो प्यूरिन का एक ही एग्जाम्पल हमारे पास है, अमीनो प्यूरिन जिसमें 6th पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ हो, तो एक एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है। This is one example of amino purine, that is 6 amino purine. बाकी सब जगह पर देखेंगे आप, बाकी जितने भी प्यूरिन सब में कीटो ग्रुप्स है यहाँ पर। रेस्ट ऑफ ऑल दे वुड बी रेफर्ड टू एज कीटो प्यूरिन। सो अमीनो प्यूरिन एक ही है, दैट इज एडेनिन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इंपॉर्टेंट है, एक बार आप उसको लर्न करना सीखें। सो एडेनिन इज 6 amino purine. This is the amino purine. अगर 6 पोजीशन पर अमीनो की जगह पर कीटो ग्रुप है, 6 कीटो या 6 ऑक्सोप्यूरिन हो, देन इट इज रेफर्ड टू एज हाइपोजेंथीन। इसे हाइपोजेंथीन कहा जाएगा। देन सेकेंड पोजीशन और 6 पोजीशन पर दोनों जगहों पर 2,6 डाईऑक्सोप्यूरिन हो, तो ये एक और कीटोप्यूरिन हो गया, दैट इज रेफर्ड टू एज जेंथीन। 2 पोजीशन पर
अमीनो लग जाए, 6 ऑक्सोप्यूरिन हो या कीटोप्यूरिन हो, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन। ये 2,6 डाईऑक्सो है, 2,6 डाईऑक्सो से ही डेरिवेटिव, अगर यहां पर कुछ और ग्रुप्स, एक्स ग्रुप को यहां पर जुड़ा हुआ है, वाई ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन। सो कैफीन इज ऑल्सो अ प्यूरिन। एंड यूरिक एसिड में ट्राई ऑक्सो कंडीशन है। सो अगर एक जगह पर डबल बॉन्ड ओ है, जैसे स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रखा है, तो वह हाइपोजेंथीन हो गया। दो जगहों पर ओ है तो वह जेंथीन हो गया। तीन जगहों पर ओ आ गया तो ये यूरिक एसिड हो गया। xanthine could be oxidized into, hypoxanthine could be oxidized into xanthine, and xanthine could be further oxidized into uric acid। हालांकि इनमें से दो स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन इज अ 6 अमीनो प्यूरिन, while guanine is 2 amino 6 कीटोप्यूरिन या 6 ऑक्सोप्यूरिन। तो बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे कीटोप्यूरिन के एग्जाम्पल, ऑल रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स दे आर एग्जाम्पल ऑफ कीटोप्यूरिन। अमीनोप्यूरिन का एक ही एग्जाम्पल है और वह है एडेनिन। ऑल्दो ग्वानिन ऑल्सो हैज एन अमीनो ग्रुप बट इट इज ऑन सेकंड पोजीशन। रेस्ट ऑफ ऑल दे आर बेसिकली अमीनो purines. Aminopurine is adenine, rest of all, whether it is hypoxanthine, whether it is xanthine, whether it is a uric acid or guanine or caffeine, all of them, they are, all these structures from here to here, all these structures, they are example of the ketopurine. Aminopurine is only one and that is the adenine. ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करें एक बार ध्यान से पोजीशंस को। कैफीन को आप छोड़ सकते हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, अब हाँ आगे बढ़ते हैं। पैरामिडीन्स जिनके अंदर सिर्फ सिंगल रिंग होती है, दे हैव ओनली डायजेंट रिंग, इमिडाजोल रिंग वहां पर साथ में नहीं। और पैरामिडीन क्योंकि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए जो नंबरिंग की जाती है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द नंबरिंग इज डन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज numbering is done like this in a clockwise direction. This is first, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, and this is sixth. It is done in clockwise direction. Again, pyrimidine could be
amino form or it could be keto form. It could be aminopyrimidine or it could be ketopyrimidine. अमीनो का एक एग्जाम्पल है दैट इज साइटोसिन एंड कीटो के एग्जाम्पल यूरेसिल भी हो गया और मॉडिफाइड यूरेसिल दैट इज रेफर्ड टू एज थायमिन. सो बेसिकली अगर इस जगह पर NH2 ग्रुप हो तो उसे अमीनो फॉर्म कह दिया जाएगा और इस जगह पर अगर कीटो ग्रुप आ जाए तो उसे कीटोपिरिमिडीन कह दिया जाएगा. जो प्यूरिन के लिए अप्लाई होता था वही बात यहां पर भी अप्लाई होती है. सो पिरिमिडीन में यहां पर यानी फोर्थ पोजीशन पर पिरिमिडीन में अमीनो ग्रुप है. थायमिन में फोर्थ पोजीशन पर कीटो ग्रुप आ गया. या थायमिन के अंदर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. थायमिन के अंदर फोर्थ पोजीशन पर कीटो ग्रुप आ गया. यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है. ये यूरेसिल है. और थायमिन में क्या हुआ कि फिफ्थ पोजीशन पर जहां पर H है अगर वहां पर मिथाइल ग्रुप आ जाए देन इट बिकम्स अ थायमिन. सो हम ये भी कह सकते हैं थायमिन इज बेसिकली मिथाइलेटेड यूरेसिल. तो थायमिन कहें या 5 मिथाइल यूरेसिल कहें, इट इज वन एंड सेम थिंग. वी कैन नेम इट एज अ 5 थायमिन और 5 मिथाइल यूरेसिल is one and same thing. That is, there is simply difference of one methyl group in thymine and uracil. Generally, we will see that RNA has a uracil while DNA has a thymine. यूरेसिल की जगह पर थायमिन आने से स्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जैसे यूरेसिल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वैसे वैसे थायमिन भी करेगा. सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का फर्क है. यूरेसिल अगर डीएनए में प्रेजेंट होता तो उसकी वजह से एक रिपेयर मशीनरी है उसको काम करने में दिक्कत होती. That repair machinery which faces a trouble if uracil is present in DNA is referred to as base excision repair machinery. So if uracil is present in DNA then base excision repair machinery will have problem. And what kind of problems we will study in molecular biology. So it was decided that whatever the uracil which is present in DNA, it should be methylated at 5th position, and if it is being done then now there is no problem in base action repair machinery. अगर यूरेसिल की 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो अब बेस एक्शन रिपेयर मशीनरी को काम करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं. सो साइटोसिन का डीअमीनेशन होकर यूरेसिल यानी साइटोसिन में यहां पर NH2 ग्रुप हट गया तो वहां पर O आ जाएगा. सो साइटोसिन का डीअमीनेशन होते ही यू फॉर्म अ यूरेसिल. सो डीअमीनेशन ऑफ साइटोसिन. सो कहीं पर साइटोसिन है वह यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया है डीएनए में या पहले से ही यूरेसिल प्रेजेंट था. ये पता कैसे करेगी रिपेयर मशीनरी? तो डिसीजन लिया कि पहले से डीएनए में यूरेसिल रखेंगे नहीं या पहले से जो यूरेसिल है वो 5th पोजीशन पर मिथाइलेटेड होगा और पहले से जो प्रेजेंट यूरेसिल अगर वो 5th पोजीशन पर मिथाइलेटेड फिर उसे हम यूरेसिल नहीं कहकर थायमिन कहते हैं. इसका मतलब बिना मिथाइल वाला यूरेसिल कहीं पर आता है तो बेस एक्शन रिपेयर मशीनरी को समझ में आ जाता है कि दिस इज बेसिकली ड्यू टू द डीअमीनेशन ऑफ साइटोसिन. वह यूरेसिल को वापस रिपेयर मशीनरी किसमें कन्वर्ट कर देती है? साइटोसिन में. सो डीएनए डैमेज होने पर साइटोसिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यूरेसिल में. और यूरेसिल को किसमें वापस कन्वर्ट कर दिया जाएगा? साइटोसिन में. बाय विच रिपेयर मशीनरी? बेस एक्शन रिपेयर मैकेनिज्म.
पर ये आसानी से विदाउट एनी कंफ्यूजन तब हो सकता है जब डीएनए के अंदर पहले से यूरेसिल प्रेजेंट ना हो। सो वापस इन तीनों पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर आप एक बार ड्रॉ कर लें, साइटोसिन का, थायमिन का और यूरेसिल का। ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नॉर्मली हम जानते हैं वॉटसन क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से, वॉटसन क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से एडेनिन और थायमीन या यूरेसिल के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए आपको पता है कि एक तरफ अगर कोई डोनर ग्रुप है तो सामने की तरफ एक्सेप्टर ग्रुप होना जरूरी है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सो देयर मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसमें इस साथ एक जगह पर केवल हाइड्रोजन कोवलेंटली जुड़ा हो और दूसरा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिससे कम से कम एक लोन पेयर मौजूद हो। सो अगर हम डोनर्स की बात करें तो डोनर ग्रुप्स को अगर हम बात करें कि डोनर ग्रुप, यहां पर NH2 ग्रुप could act as a donor in N structure of adenine. Thymine में this can act as a donor. In guanine this group could act as a donor. This group could also act as a donor. In cytosine this group could act as a donor. In case of adenine this will act as a acceptor. In thymine this groups could act as a acceptor. Here this group act as a acceptor, here this group can act as a acceptor. So compatibility is like that. In case of adenine thymine pairing, in adenine thymine pairing, this is the donor, this is an acceptor group. One hydrogen bond is possible over here. This is another acceptor and donor on this side. The second hydrogen bond is possible. Here acceptor is there but there is no donor on this side. So only two hydrogen bond they are possible between an adenine and thymine. Adenine and thymine will form two hydrogen bonds. Well, according to Watson and Crick hydrogen bonding, in guanine and cytosine, a triple hydrogen bond could be formed. Here again you can see that there is an acceptor and a donor group, and there is also a donor and acceptor group. So compatibility is being fulfilled at three different places. So there are three hydrogen bonds between guanine and cytosine. They are only having a molecular compatibility, so adenine will form hydrogen bond with thymine and guanine will form hydrogen bond with the cytosine. But we know that there are some other places which can also participate in a hydrogen bonding. For example, this
place can form a 2 hydrogen bond because this is having 2 hydrogen. This can form a 1 hydrogen bond because there is a 1 lone pair. Even this nitrogen can have form of 1 hydrogen because it is having 1 lone pair. This will not be available because it will interact with the ribose sugar. This has 2 lone pairs, so 2 hydrogen bond it can form, although at present it is forming only 1 hydrogen bond. 2 बना सकता है पर अभी 1 बना रहा है डायग्राम में. यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड और बनाया जा सकता है. यहाँ पर 2 लोन पेयर है तो इसलिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर और बनाए जा सकते हैं. ये नाइट्रोजन बना सकता है पर ये शुगर के साथ जुड़ता है इसलिए अवेलेबल नहीं होता. इस तरह से एडेनिन हम देखते हैं मैक्सिमम 5 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. थाइमिन भी मैक्सिमम 5 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पर कॉम्पेटिबिलिटी कितनी जगहों पर है? सिर्फ 2 जगहों पर. ग्वानिन में यहाँ पर 2 लोन पेयर है इसलिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना सकता है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना सकता है, 2 यहाँ पर बना सकता है, 1 लोन पेयर यहाँ पर है इसलिए 1 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर, 1 लोन पेयर यहाँ पर है इसलिए 1 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बना सकता है. दिस पोजीशन वुड बी इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग विद द शुगर. सो कितने हो गए? 2 + 1 3 + 4 + 5 6 एंड 7 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है. साइटोसिन के अंदर यहाँ पर देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर पॉसिबल. 1 यहाँ पर पॉसिबल है, 2 लोन पेयर यहाँ पर है, 2 यहाँ पर पॉसिबल है. सो 5 हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर एडेनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन दे कैन फॉर्म 5 हाइड्रोजन बॉन्ड बट ग्वानिन हैज अ मैक्सिमम पोटेंशियल. ग्वानिन हैज मैक्सिमम possibility to form हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आगे हम पढ़ेंगे कि जो डीएनए AT के साथ GC के साथ इंटरेक्ट करता है उसके अलावा कई सारे प्रोटीन्स भी डीएनए के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं. इसका मतलब देयर मस्ट बी सम ग्रुप जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्री हो. तो हम देख रहे 7 में से सिर्फ 3 ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, बाकी के 4 पोजीशंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है. दे कैन स्टिल पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द प्रोटीन्स. ओके, सो वी विल स्टडी दैट देयर इज अ हुगस्टीन बेस पेयरिंग जहां पर सम नॉन कैनोनिकल प्लेसेस दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन अ हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर ये पर? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कुड बी फाउंड बाय ग्वानिन. अब क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस एज देयर नेम सजेस्ट दैट दे आर बेस है तो उन्हें बेस वाला काम भी करना चाहिए, कहीं ना कहीं पर H+ आयन एक्सेप्ट करना चाहिए. दे मस्ट गेट प्रोटोनेटेड बिकॉज एसिड आर दोस विच लिबरेट एन H+ आयन. बेस इज दैट which takes H+ आयन which get protonated at an very low pH. There could be protonation. That is, this position can protonated in case of purines, while this position will get protonated in case of cytosine. So we can say nitrogen 1 of purines and nitrogen 3rd of pyrimidine get protonated at lower pH, and if they will get protonated their solubility in water will also increase. At pH 7 the solubility of these nitrogenous bases is very less, but if you decrease the pH these can get protonated, and if they get protonated thus their solubility in water increases. Then these nitrogenous base they associate with a sugar, and once they associate with a sugar now they are referred to as nucleosides. In case of purines like adenine and guanine, the glycosidic bond is formed between the 1' of ribose sugar and nitrogen 9. It is between a 1' of ribose sugar and
N9 ऑफ नाइट्रोजन। ये तो हम कल ही पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर कि शुगर की तरफ से एनोमरिक कार्बन है वह इन्वोल्व होगा, बट जो नाइट्रोजनस बेस है उस या जो अग्लाइकेन है वहां से कोई भी पोजीशन है वह पार्टिसिपेट कर सकती है बॉन्डिंग। सो बेसिकली ये डिराइव्ड शुगर्स ग्लाइकोसाइड्स हो गए। नॉर्मल जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट हैज बीन डन फॉर नाइट्रोजन बेस। और नंबरिंग के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जो प्राइम नंबरिंग है वह शुगर के लिए, यानी 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, ये नंबरिंग हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? शुगर के लिए। यानी क्या 2 प्राइम एंड फ्री है, 3 प्राइम एंड फ्री है, से समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द राइबोज शुगर। या सेकंड कार्बन फ्री है या थर्ड कार्बन फ्री है, तो इससे समझ में आ जाना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजनस बेस। So normal numbering for nitrogenous base, while prime numbering is for the sugars. So we are saying that anomeric carbon, this is the anomeric carbon, this is the anomeric carbon, this is the first position जहां पर anomeric carbon है वो हमेशा पार्टिसिपेट करेगा। जहां से OH ग्रुप लिबरेट होगा और सामने की तरफ से हाइड्रोजन आना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा जब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो। So whenever there would be bond formation, what will happen is H from this side and OH from this side would be liberated in form of water molecule. OH ग्रुप अबव द प्लेन है, इसलिए बॉन्ड किस तरीके का है? तो हम कहेंगे बीटा C1N9, बीटा बॉन्ड है। अगर OH ग्रुप डाउन द प्लेन होता तो उसे अल्फा कहते हैं। यहां पर OH ग्रुप अबव द प्लेन है और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो बॉन्डिंग किसके बीच में है? तो नाइट्रोजन 9 ऑफ प्यूरिन्स एंड नाइट्रोजन 1 ऑफ पिरिमिडीन्स। और ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन किया जा सकता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पर रोटेशन पॉसिबल है। दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वेयर रोटेशन इज पॉसिबल। मोस्ट कॉमन जो कंफर्मेशन, जैसे अभी डायग्राम में बता रखी है, जो मोस्ट कॉमन कंफर्मेशन यहां पर डायग्राम में बता रखी है वो सिन है, बट इस बॉन्ड पर रोटेशन हो जाता है और ये पूरा ग्रुप घूमकर इस साइड में आ जाता है। इट मूव रोटेट लाइक दिस एंड नाउ इंस्टेड ऑफ सिन इट वुड बी रेफर्ड टू एज एंटी ओरिएंटेशन। मैं यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, यहां पर ही कोई रोटेट होकर कुछ इस तरीके की स्थिति, conditions if become like this nitrogen, it becomes like this, if become like this, then we will say that now it is in anti orientation। अब ये एंटी ओरिएंटेशन में है। ओके, गॉट दिस? ये रोटेशन हो गया। बाकी सब चीजें सेम है, यहां पर ये OH ग्रुप भी है, यहां पर भी OH ग्रुप है, यहां पर भी OH ग्रुप है। अब ये हमने कौन सी ओरिएंटेशन बता रखी है? एंटी, एंड दिस इज मोर फेवरेबल इन न्यूक्लिक एसिड्स। सो इन सिन ओरिएंटेशन you can see that all these groups they are on this side. In syn orientation all these groups they are on this side. In anti orientation these all groups they comes toward the helix. So glycosidic bond is syn, but anti orientation is more favored in nucleic acids, whether it is a A form of nucleic acid or B form of nucleic acids. In Z form nucleic acids, exceptionally you will find that purines they are linked through a syn glycosidic bonds, but that is an exception. Now adenine plus sugar, once it get associate, adenine plus sugar get associate, now it is referred to as adenosine. It is referred to as adenosine. Similarly cytoguanine plus sugar is referred to as guanosine. So for purines, yeah, for purine nucleosides the suffix which is utilized is syn, पर cytosine में तो पहले से syn है, cytosine already has a syn, so what to do? So for pyrimidine the suffix which is utilized is din. So adenosine, guanosine, nucleosides are adenosine
and guanosine. Similarly, even there could be you can say xanthinosine, xanthine plus sugar, xanthinosine, and inosine. That is also very important. That is hypoxanthine plus sugar is not referred to as hypoxanthinosine. It is referred to as inosine. And important pyrimidines include cytidine, thymidine, and uridine. These are different nucleosides. Now, nucleotide, they have a extra phosphate group derived from phosphoric acid. ओके, सब में बॉन्ड डायग्राम आप बना लें कि वन प्राइम विथ अ वन प्राइम विथ नाइट्रोजन 9, वन प्राइम विथ अ 1. These are ribose based nucleosides. Then nucleotide. So for example, this is ribose sugar, this is an adenine, nitrogenous base, plus if one phosphate group associate to this, if one phosphate group, this first phosphate group which associate to this is referred to as alpha phosphate, then this structure would be referred to as adenosine monophosphate, a nucleotide. Adenosine monophosphate, AMP. This is now nucleotide. And adenosine monophosphate, it is an adenosine plus phosphate. This first phosphate is referred to as alpha phosphate, and this is linked through a bond referred to as phosphoester bond. So this bond, P double bond O O bond, this is referred to as phosphoester bond. अगर सेकंड टाइम में दोनों तरफ भी शुगर आ जाए तो डाइएस्टर कहेंगे, पर अभी एक तरफ ही शुगर है. Here to AMP, adenosine monophosphate, another phosphate could also be added. A second phosphate could also be added, and the second phosphate which is added is referred to as beta phosphate. This second phosphate, that is, now it would be referred to as adenosine diphosphate. That is ADP. ADP is AMP plus inorganic phosphate, or we can say simply we can write it as phosphate, AMP plus one more phosphate, and now the second phosphate which is added is referred to as beta phosphate, and the second phosphate is linked through a phosphoanhydride bond, and this phosphoanhydride bond, as we already discussed, is an energy rich bond. And one more phosphate, ADP is AMP पर चार्ज -2 होगा, तो ADP पर चार्ज -3 होगा. One more phosphate could be added to this structure. एक और phosphate add किया जा सकता है. This is referred to as gamma phosphate. One more phosphate, it has been added, gamma phosphate. That is, now the structure is referred to as adenosine triphosphate. The structure is referred to as adenosine triphosphate or
ATP, the charge is -4. Adenosine triphosphate is basically ADP plus one more phosphate. This phosphate is referred to as gamma phosphate. Another bond which is formed is referred to as phosphoanhydride bond. So first adenosine, then adenosine monophosphate, then ADP, then ATP. ATP is having -4 charge. Strong repulsive forces now they are operating. One minus, this is second minus, this is the third minus charge, and this is the fourth minus charge. Further addition of phosphate is not possible because anionic repulsive forces they are very high. So this is the structure of a ATP, adenosine triphosphate. अगर यहाँ पर गुआनिन होता तो इस तरीके से GTP बन सकता है, इस तरीके से CTP बन सकता है, इस तरीके से UTP बन सकता है. फर्क क्या है? सिर्फ बेस का फर्क है. These are most common energy currency of cell, that is ATP, UTP, GTP, CTP, etc. So draw this diagram. It has two energy rich phosphoanhydride bond. इसलिए ATP को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप शॉर्ट में. ATP में there is one phosphate और एनर्जी रिच बॉन्ड को इस तरह से वेवी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. Okay, got this? So this is the structure of adenosine triphosphate, ATP, a nucleotide. Then moving further, आगे बात करते हैं अब. जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उनके अंदर फर्क फ्रेंड सिर्फ एक OH ग्रुप का ही है. 2 प्राइम पोजीशन पर अगर OH की जगह पर H आ जाए तो अब डीऑक्सी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, अब ये स्ट्रक्चर बन गया DATP का, डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ATP. फर्क क्या है? सिर्फ सेकंड पोजीशन पर जहां पर OH होता था वहां पर H आ जाएगा. इन्हें अब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाएगा. सो इस तरीके से डीऑक्सी ATP, डीऑक्सी ATP, CTP कुछ भी हम इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं. डीऑक्सी GTP या डीऑक्सी CTP या डीऑक्सी TTP, these could be produced. Again having 3 phosphate, alpha phosphate, beta phosphate and gamma phosphate. So deoxynucleotides, they are having a deoxyribose sugar. We will find that RNA they have ribose sugar and DNA has a deoxyribose sugar, and this confers the stability. The reason is that this OH group, as you can see, that already involved in bonding, this OH group would be involved in phosphodiester bond formation. This OH group is involved, this is already involved in phosphodiester bond formation. Only this OH group is free in the ribose sugar. And if this OH group is free, this can show a nucleophilic activity. Means you can see that this OH group, if it is free, because this will involve in the
this would be involved in phosphoester bond, this would be involved in phosphoester bond, this is involved in bonding with the base. This OH group is free, and if this OH group is free, then this can carry out a nucleophilic attack which will decrease the stability of molecule. So in ribonucleotide, the decision was taken that in a DNA, instead of ribonucleotide, deoxyribonucleotide would be utilized, which is not having any free OH group, and if there is no free OH group, it will enhance the stability of molecule. So these are deoxyadenine nucleotide. Now various modified nucleotides, they can also occur in nucleic acids. For example, you can find a N6 isopentyl adenine, means this is, you can say, adenine. Let's say this is so I am drawing a rough structure. Let's say this is the structure of adenine. Okay, this is the structure of adenine. And if there is a isopentyl means you are having this kind of group over here, CH double bond CH, CH, if you are having this kind of structure, CS3, CH2, CS3, then this would be referred to as isopentyl adenine. N6 isopentyl adenine, that is also referred to as IPA, is one of the form of auxin. Similarly, you can have another modified, although सभी structure आपको याद रहना कोई जरूरी नहीं है, but you can have another modified guanosine. गुआनोसिन का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें, बेसल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, नाइट्रोजन इधर की तरफ NH2 हो जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर वापस नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। वैलेंसीज को एडजस्ट कर लिया हमने, ये गुआनोसिन। और नंबरिंग हमें पता है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। N2 मीन्स यहां पर दो NH2 की जगह पर मिथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ नाइट्रोजन तो है ही, नाइट्रोजन की जगह पर मिथाइल ग्रुप। इस तरीके की मॉडिफाइड बेस है वह भी देखने को मिल सकती है, दैट इज N2 डाइमिथाइल गुआनोसिन। इस तरीके से 5 मिथाइल डीऑक्सीसाइटोसिन, वो तो आराम से देखने को मिल सकती है कि साइटोसिन की 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप। ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर हो गया, नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, इस जगह पर नाइट्रोजन, और यहाँ पर राइबोस की जगह पर ये कह रहा है डीऑक्सी राइबोस, तो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस शुगर जोड़ दें, डीऑक्सी राइबोस शुगर, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज the structure of cytosine, this is normal structure of cytosine. Numbering is 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पर 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ जाए, सिंपली व्हाट इट इज टॉकिंग इज a मिथाइल ग्रुप एट दिस पोजीशन, तो आराम से आ सकता है, तो इट इज रेफर्ड टू एज 5 मिथाइल डीऑक्सी साइटोसिन। इस वजह से 2 थायोयूरिडीन, 4 थायोयूरिडीन, तो पहले तो यूरिडीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिडीन, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, एंड दिस विल लिंक विथ अ शुगर, ओके, एंड दिस इज NH, दिस इज नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। नाउ व्हाट इट सेइंग दैट 2 thiouridine, 2 thiouridine means instead of oxygen, here you are having a sulfur. 4 thio means here sulfur, 4 thiouridine. Pseudouridine mein what happens is that pseudouridine would be somewhat like this, that here again you are having oxygen, here you are having oxygen, but sugar instead of this first position, if sugar get linked with this position, sugar associated with the 5th position, then it is referred to as pseudouridine. Pseudouridine.
In dihydrouridine, what happens is that you are having a तो आइसोपेंटल एडेनिन का स्ट्रक्चर है. इन डाइथायोइरिडीन के अंदर क्या होगा कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा. डाइहाइड्रोइरिडीन के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर. ऑल्दो वापस स्ट्रक्चर याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ से डबल बॉन्ड अगर हट जाए, नाइट्रोजन तो है ही, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर, सॉरी नाइट्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन गड़बड़ कर दिया. स्ट्रक्चर वापस ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से विद इन 1 मिनट. नाइट्रोजन नाइट्रोजन A double bond O and H over here, and here you put HH and HH over here. Then this is the structure of dihydrouracil. This was the structure of pseudouracil. Okay, and even so, in this way, 2' O methyluridine जो सेकंड पोजीशन है, इस सेकंड पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप को जोड़ दो, तो these all are some kind of, you can say, modified nucleosides which could be seen in the nucleic acids. Moving to some adenosine derivative. One of the adenosine derivative is cyclic EMP, where the 5' is forming a bond with a 3'. This is the cyclic structure referred to as cyclic EMP. It is an adenosine derivative, and this is a secondary messenger. So an enzyme, adenylate cyclase, what it can do is it can convert an ATP into cyclic AMP by releasing a 2-phosphate. Pyrophosphate would be released, beta gamma phosphate would be released, and the alpha phosphate, it is forming a bond with its own 3', then it is referred to as cyclic AMP. Similarly, another adenosine modified derivative is S-adenosylmethionine, which is needed for the enzymatic activity. So second cyclic EMP is secondary messenger, common secondary messenger, although it is also a signaling molecule in aggregation. S-adenosylmethionine, it is needed for the activity of methyl transferase, as well as this is also a precursor for इथाइलिन हार्मोन के प्रिकर्सर का काम भी करता है. So this is an adenine plus sugar, and this is a amino acid methionine. This is a methionine. So the structure is of S-adenosyl methionine. Similarly, there could be a structure of cyclic GMP, which is also important secondary messenger, which is also an important secondary messenger. You will study it in relaxation of smooth muscles as well as at various other places. It can important role in vasodilation as well. Cyclic GMP, a derived from GTP. GTP could be converted into cyclic GMP. So these are some of the nucleotide derivatives. Some synthetic derivatives, nucleotide analog. One is azidothiamidine and another is dideoxyinosine. Both are routinely utilized for irreversible inhibition, या simply अब इतना लिख दें कि they are utilized for they are strong inhibitors for reverse transcriptase. An important enzyme of various retroviruses, example HIV, means lentiviruses family के member या retroviruses के लिए ट्रीटमेंट में काम आते हैं एजिडोथाइमिडीन एंड डाइडियोक्सिआइनोसिन. Purine analogs like allopurinol, it inhibits the activity of
ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, एंड दिस हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज रेफर टू एज अ गाउट। गाउट ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया गया। बेसिकली गाउट इज ड्यू टू एन accumulation of gout is basically due to an accumulation of xanthine, sorry, uric acid, which is derived from the xanthine. So the activity of xanthine oxidase is basically blocked by the allopurinol. Allopurinol is irreversible inhibitor. So today we are finishing this class up to over here. We have studied about the nucleotides. In next class we are going to discuss the nucleic acids, mainly the different conformations of and forms of DNA, like B form of DNA, A form DNA, Z form of DNA. That topic is very important. Okay, so keep revising. रिविजन के लिए जैसे मैंने बताया बेटर कि आप उसे डाउनलोड कर लें ताकि आपके डाटा कंजप्शन कम होंगे और फास्ट आप स्लाइड कर पाएंगे। नहीं तो क्या कि डाटा स्ट्रीमिंग करते रहेंगे तो बार बार आपको इंटरनेट स्पीड के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। और मेक अ हैबिट कि आप लाइव क्लास को अटेंड करें, क्योंकि अदर चीज़ें पुल अप होने लग गई तो फिर आप उन्हें वापस नहीं पकड़ पाएंगे। एंड एट दिस मोमेंट डोंट ट्राई टू लीव एनी यूनिट कि बायोकेमिस्ट्री टफ है मैं छोड़ दूँ, नहीं, कोई टफ नहीं होता। एक बार कोशिश तो करो, अभी तो शुरुआत है, अभी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, किसी भी यूनिट को छोड़ना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री है उतना ही इंपॉर्टेंट जनरल एप्टीट्यूड है। सो मेहनत करें, दिल लगा कर करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ट्राई टू अर्न नॉलेज। डोंट स्टडी फॉर मार्क्स, स्टडी फॉर नॉलेज, एंड इफ यू डू सो देन आवर जॉब इज बीइंग डन। ओके, बस आप अपना नॉलेज बढ़ा लें, नंबर अपने आप आएंगे। सो थैंक यू, वापस मिलते हैं कल की क्लास के अंदर।